This is Suraj saying Jai Bharat. This is Jai Bharat and today is 25th December 2019. Happy Christmas, Merry Christmas. Wish you all the best for Christmas, all people on earth, all creatures on earth. मसीहा के जन्म, मसीहा दिवस सबको बधाई. मसीहा क्रिसमस डे 2019 का सबको शुभकामनाएं. मैरी क्रिसमस. भारत, इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड वी पीपल ऑफ इंडिया. हम भारत के लोग. टुडे आई एम जस्ट इंटरेस्टेड टू टेक यू बैक टू 1947 when we got freedom from our immediate past rulers, British. In 1947, 1947, we got free under one act known as Independence of India Act 1947. I am just going to discuss on that because a lot of confusion exists among people. On what basis we were divided, partitioned. That is very significant because clarification is a must. People are confused, misinformations are being spread all over the nation, and youth have been misled by many vested political interests. We should be clear about what we are talking, and until we are clear, we remain in confusion, and the state of mix-up or confusion is not good for citizens and nation. It's not a question of credit or debit to some persons, it's a question of facts. It may be good or it may be bad, doesn't matter, you cannot change history. Many people are causing many confusions and hate is being generated, hate is being raised among people's minds and conscience. That is never good for health of country because we are SSSDR, we are a nation, we are nation founded on sovereign status, socialist status, secular status, democratic status and republic status, which we are defined in preamble of our constitution. You may say structure of our constitution, real structure, guiding principle of structure of constitution, and that is our preambles, which mandates that we people of this country having resolved to constitute ourselves into SSSDR, which I told you already, to secure to its people justice, liberty, and equality, etc., etc., etc. How did it come? Have we got this fortune to have this constitution and all these powers are defined preambles and all articles and amendments included in the constitution? That all goes back to 1947 Independence of India Act. And before independence, it was many, you can say, plans given by Mountbatten, or past Governor General, or Viceroy of this country. I like you to take you to little discuss on India Independence Act. I've already put URL of that copy of USC, this India Independence in a text of this video. You can download if you wish. One video is available as well as one file is available for India Independence, because many of you might have not seen that statute. So although it's not valid, it's gone, it's repealed, and because Constitution of India has replaced everything. Government of India Act 1935 replaced India Independence Act 1947 replaced, and now in force is Constitution of India 1947 effective 1950. We must go to root first to see what's wrong, what's right. There might have been any meetings, any number of meetings before that Indian was generated. That's all history. You cannot claim anything on that. Claimable is only what's written on Act, what's included in the Act. We cannot blame anybody for that because we as country were granted power by this Act from our British government, British ruler, and that only stands today. All others are hearsay. All other information they are receiving are gossips or because invalid. बहुत जरूरी होता है जानना कि हम जब स्वतंत्र हुए थे 1947 में किस प्रकार स्वतंत्र हुए थे,
ऐसा क्या हुआ था, उसके पीछे कितनी कहानियां बनी थी। बड़ी अफवाहें फैलाई जाती हैं देश के अंदर कि धर्म के नाम पे ये बंटवारा हुआ, धर्म के नाम पे वो बंटवारा हुआ। सच्चाई तो ये है कि वह बहुत एक पब्लिक के अंदर जहर फैलाने वाली, एक गलत फहमी फैलाने वाले काम किए जा रहे हैं। चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि कोई फायदा नहीं है लेने का। जो इतिहास है वो है, लेकिन हमारे पास जो नियम कानून के अंदर हमें पास किया गया वहां से कि जाइए आप आजाद होइए, स्वतंत्र होइए, वही चीज हमको समझनी चाहिए कि आखिर वो क्या है, वो सच्चाई क्या है इतिहास की। हालांकि वो नियम कानून 1947 का स्वतंत्रता वाला अधिनियम अब नहीं है, लेकिन उसकी हिस्ट्री है। वो रिपील हो गया 1947 में, जब 50 में जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना, संविधान बना, और उसी प्रकार से भारत सरकार का 1935 का अधिनियम भी समाप्त हो गया। लेकिन बैकग्राउंड है, हिस्ट्री है, वो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट, ऐतिहासिक दस्तावेज हैं। हम उसके बारे में नहीं जानते हैं तो बहुत कम लोग जानते हैं। आज का युवा, आज का मिडिल एज का आदमी, उसके बारे में शायद वो कभी देखा नहीं होगा, पढ़ा नहीं होगा। इसलिए मैंने उसके URL यहाँ लिख दिए हैं इस वीडियो के टेक्स्ट में। आप चाहें तो उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं उस कागज में क्या लिखा है, या उस वीडियो में आपके समय माउंटबेटन जो यहाँ थे उस टाइम में उन्होंने क्या कहा, अब किस पार्टी ने क्या कहा क्या नहीं कहा, उन बातों का कोई मतलब नहीं रहता है। उस समय क्या हालात थे क्या नहीं थे, हमको वो भी ध्यान में रखना, बात करनी चाहिए। आज ये नहीं कर सकते आज के हालात को ध्यान में रखकर उस समय की बात की जाएगी तो उस बात का कोई तात्पर्य नहीं, मतलब नहीं है, कोई दम नहीं होता उस बात में। उस समय जो हालात थे, क्या मजबूरियां रही थी, ऐसा करना जरूरी था या नहीं था, दो देश बनने थे कि नहीं थे, अब उस समय की बातों के हिसाब से बनने रहे होंगे तभी ऐसा हुआ। आज गालियां देना, किसी किसी को पूर्वजों को गालियां देना, बेकार की बातें करना, इन्होंने ऐसा किया होता तो ये होता, उन्होंने ऐसा किया होता तो वो होता, आज वो होता तो ये होता, ये सब कहानियां कल्पनाएं हैं, वास्तविकता से बहुत दूर। हमारे हमारे नेताओं की आदत है बाल की खाल निकालना बिना मतलब का, इससे कोई अंत नहीं। सच्चाई सामने रख के बात कीजिए तो बात समझ आए। अब देश किस तरह टूटा, किस तरह क्या हुआ, उन बातों को छोड़ो। समझिए ये कि वो कानून जिसके नीचे आप आए, जिसके अंदर आपको आजादी का प्रदान मिला, वो क्या है, वो आवश्यक है, उसको ध्यान में रख के आगे चलिए। पिछली बातों को भूल जाइए, क्योंकि पिछली बातें मुंह जबानी थी, क्या था उसका कोई मतलब नहीं रहता। जहर फैलाने आप फैलाते रहिए, झूठ बोल के पब्लिक को गुमराह करते आप करते रहिए, उसका कोई अंत नहीं होता, क्योंकि झूठ के पैर ज्यादा लंबे नहीं होते। झूठ तो गिरना ही है, जितना मर्जी फैला लो आप, जितनी मर्जी दम लगा लो आप, एक सच के सामने सारा झूठ बेकार है। 1 करोड़ भी झूठ कहता हूं, एक सच के सामने सब गिर जाते हैं। नो false statement can stand. Even if there are billions of false statements, one truth can defeat all them, can destroy all them, like an explosive power that truth has got. Satyemev Jyete. Truth always triumphs. Nobody can destroy truth. Even if you want to destroy, truth cannot be defeated, cannot be destroyed. You shall be destroyed. Truth shall defeat you. Even if you design whatever way your fake statements, truth cannot be defeated. This is fact of life, and it is better not to go into depth before what happened previous to point 47, because that got no meaning at all. It only generates hatred, it generates poison in minds of people. It generates nothing else except stupidity, dissemination of fake information among public, brainwashing minds of people, polluting their minds, putrefying their minds, which lead to nowhere except nonsense, except deterioration of nation and society. हमको जानना होना चाहिए, पता होना चाहिए कि वास्तव में क्या हुआ था, जो कि हम नहीं जानते। कि हम में से बहुत से पैदा भी नहीं हुए थे उस टाइम में, और उसके बाद हम कभी डॉक्यूमेंट पढ़ना नहीं जानते, कोई हिस्ट्री में जाना नहीं जानते, जो किसी ने बोल दिया वही सुन लिया, वही सच मान लिया। यही होता है, आया है, यही होता है। इसलिए मैंने सोचा कि चलो थोड़ा टाइम आपका लेते हैं, भारत की स्वतंत्रता का जो अधिनियम 1947 का है वो क्या है उसके बारे में थोड़ा जाने, ताकि कुछ सच्चाई सामने आए। सच्चाई का सामने आना उतना ही आवश्यक है जितना जीवन के सांसों का चलना।
हमें गलत इंफॉर्मेशन मिलने का मतलब है अपने आप का नुकसान। जो देने वाला है वो सूचना गलत दे जाएगा, आपका दिमाग खराब कर जाएगा। आप दिमाग में उस गोबर को भर के बैठिए, उसका कोई परिणाम नहीं आएगा। सच्चाई जब तक नहीं जानोगे, भगवान भी प्राप्त नहीं हो सकता। झूठ के बेस पे कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता झूठ के अलावा, ये बात समझ लेनी चाहिए। और जो उस चीज को नहीं समझते वो कुछ नहीं कर सकता कोई भी उनका। जो सच्चाई से दूर भागते हैं वो सच्चाई से नहीं बल्कि अपने आप से दूर भागते हैं, अपने मन से, तन से, दिमाग से दूर भागते हैं। और कब तक भागोगे? भागते रहिए। कहाँ जाओगे भाग के? जहां भी जाओगे उस घुटन में रहोगे, उस झूठ की घुटन से बाहर नहीं आओगे जब तक सच का सामना नहीं करोगे। इसलिए बहुत आवश्यक है, सभी के लिए मैं कह रहा हूं। मुझे किसी राजनीतिक दल से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन सच्चाई राजनीतिक दल की कोई गुलाम नहीं है। सच्चाई सच्चाई है, उसको जानना बहुत जरूरी है। इट इज मैंडेटरी टू नो ट्रूथ, एंड इफ यू वांट रन अवे फ्रॉम ट्रूथ, you shall not run away from truth, but run away from yourself. That's very important. When you run away from self, you cannot do anything in life. You stay in a polluted environment, in a suffocated environment. That's why I'm just going to tell you about Independence Act 1947 and URL. Again, I'm telling you URL of that I put on video text. You can download that document. There's one URL for text of the Independence Act and another one video that's regarding that act. So I would like to discuss that act with you. It's very significant act for us to know, all those youth particularly. And this is India Independence Act 1947, भारत की स्वतंत्रता का अधिनियम 1947, जो कि अब इनवैलिड है, रिपील्ड है, क्योंकि भारत का संविधान बन चुका है। Constitution of India has been in effect since 1950, and is given in this our constitution that Government of India Act 1935 as well as India Independent Act 1947 have been repealed. But it happens, so this is chapter 30. This says an act to make provision for setting up of an act to make provision for setting up in India of two independent dominions to substitute other provisions for certain provisions of Government of India Act 1935 which apply outside those dominions, and to provide for other matters consequential on or connected with setting up of these dominions. 18th July 1947 ये अधिनियम जो बनाया जा रहा है, इसके जितने भी नियम इसमें दिए गए हैं, ये है जो भारत है 18 जुलाई 1947 को उसके दो हिस्से किए जाएंगे जो स्वतंत्र होंगे, दो देश। और जो सारे के सारे इसमें लिखा गया है, जो दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में, भारत सरकार के अधिनियम 1935 में, उन सबको हटा दिया जाएगा। जो भारत पे लागू होता है या भारत से बाहर भी लागू होता है, ये उसकी जगह लेगा। स्वतंत्रता एक्ट, स्वतंत्र अधिनियम इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 दिनांक 18 जुलाई 1947। अब ये क्या कहता है आगे? Be it enacted by King Most Excellent Majesty, be it enacted by King's Most Excellent Majesty, by and with advice and consent of lords, spiritual and temporal, and commons in this present parliament assembled, and by authority of same as follows. ये पारित किया जाता है, नियमित किया जाता है राजा के द्वारा ब्रिटिश के, उनकी एडवाइस पे, सलाह पे, जो लॉर्ड्स हैं हमारे देश के, ब्रिटिश के, टेम्पोरल हैं, कॉमन्स हैं, जो सब हाउसेस का, पार्लियामेंट का, वहाँ का, संसद का, उनके द्वारा, उनके अधिकार के अंदर जो उनको अधिकार हैं, उसके द्वारा इस अधिनियम को बनाया तथा पास किया जाता है निम्नलिखित प्रोविजंस के साथ जो नीचे दिए गए हैं। उसके हिसाब से वो क्या दिए गए हैं मैं उसको बताता हूँ। नंबर वन, as from 15th day of August 1900
Then 47, two independent dominions shall be set up in India to be known respectively as India and Pakistan. 15 अगस्त 1947 से दो देश बनाए जाएंगे। भारत जो इंडिया के नाम को हटा के दो देश बनेंगे और एक का नाम इंडिया होगा और दूसरे का नाम पाकिस्तान होगा। इसमें कहा गया एक एक में। इसके बाद आइए एक दो में, said dominions are hereafter in this act referred to as new dominions and said 15th day of August is hereby hereafter in this act referred to as appointed day. इन देशों के जो नए देश बने हैं, नया देश कहा जाएगा इन दोनों को, इंडिया पाकिस्तान दो देश, इंडिया एंड पाकिस्तान दो देश। और 15 अगस्त 1947 वो दिन हम मुकर्रर कर रहे हैं, हम फिक्स कर रहे हैं इन देशों के बनने के लिए इस नियम में। उसके बाद दो में आइए, 2.1 क्या कहता है? 2.1 subject to provisions of subsections 3 and 4 of this section, territories of India shall be territories under sovereignty of His Majesty, which immediately before appointed day were included in British India, except territories which under subsection 2 of this section are to be territories of Pakistan. ये जो नंबर 1 है 2 का, ये कहता है वो जो 3 और 4 में नीचे दिया गया है उसकी कंडीशन पे इस देश को, इंडिया को दो हिस्सों में बांटा गया। टेरिटरीज ऑफ भारत की हैं, हमारे नीचे, हमारे किंग के नीचे, राजा के नीचे जो सेवेंटीन को बांटा जा रहा है। इन टेरिटरी का मतलब बाउंड्रीज को, जो इस 15 अगस्त 1947 से पहले थी, ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा थी, उनको बांटा जा रहा है। उसके अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ दिस सेक्शन, इसके दो जो सेक्शन में लिखा है, और एक भारत की, एक इंडिया की टेरिटरी होगी और एक पाकिस्तान की टेरिटरी होगी, बाउंड्री होगी, एरिया होगा, जो 3 और 4 के हिसाब से सी में दिया गया है। वो क्या है वो देखते हैं। अब ये क्या कहता है 2.1 में, 2.2 में, subject to provisions of subsection 3 and 4 of this section, territory of Pakistan shall be। अभी इसमें वो 3 और 4 में इसके अंदर डिफाइन कर रहा है कि पाकिस्तान की टेरिटरीज कौन सी होगी। टेरिटरीज विच ऑन अपॉइंटेड डे, मतलब 15 अगस्त, territory which on appointed day 15 August 47 are included in provinces of East Bengal and West Punjab. East Bengal and West Punjab territories on appointed day, this is of Pakistan, for East Bengal and West Punjab as constituted under 2 following sections। और sections देखिए, ईस्ट बंगाल बोल दिया, territories which at date of passing of this act are included in province of Sindh and Chief Commissioner's province of British Baluchistan। वो हिस्से जो इस एक्ट के पास होने वाले दिन 15 अगस्त 47 को सिंध के राज्य में, सिंध के प्रोविंस में, और चीफ कमिश्नर प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश बलूचिस्तान, वो इफ वेदर, इसके बाद सी में लिखा, इफ वेदर before or after passing of this act but before appointed day, 15 अगस्त 47 से पहले, जब ये एक्ट पास हो उससे पहले, बिफोर और आफ्टर पासिंग ऑफ दिस, और उसके बाद गवर्नर जनरल, उसके बाद का मतलब 15 अगस्त 47 से, गवर्नर जनरल declares that majority of valid votes cast in referendum which at date of passing of this act is being or has recently been held in their behalf under this authority of Northwest Frontier province are in favor of representatives of that province taking part in Constituent Assembly of Pakistan. Territories which at date of passing of this act
are included in that province. दोबारा पढ़ देता हूँ ताकि आप क्लियर हो जाए. If, whether before or after passing of this act, if whether before or after passing of this act but before appointed day, Governor General declares that majority of valid votes cast in referendum which at date of passing of this act is being or has recently been held in that behalf under this authority in Northwest Frontier province are in favor of representatives of that province taking part in the Constituent Assembly of Pakistan territories which at date of passing of this act are included in that province. अब हिंदी में बड़ा मुश्किल होता है बताना, फिर थोड़ा बहुत बताऊंगा टूटा फूटा. इस 15 अगस्त से पहले 47 से या उसके बाद, लेकिन इससे पहले में जो भी गवर्नर जनरल ने घोषणा की कि उन वोट्स का जो वहाँ कास्ट किए गए रेफरेंडम से इस तारीख को उनको माना गया, अथॉरिटी में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर की उसकी उनके जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे, जो नुमाइंदे उनके होंगे, उनके जो प्रतिनिधि होंगे, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हिस्सा लेंगे. अब इतना वाक्य आप पढ़ लीजिएगा. इसके चलते हैं आगे. नथिंग इन दिस सेक्शन shall prevent any area being at any time included in or excluded from either of new dominions. So, nothing in this section shall prevent, इस में जो लिखा गया है इस सेक्शन में उसमें कोई रुकावट नहीं होगी. Nothing in this section shall prevent any area being at any time included in or excluded from either of new dominions. So, however, no area not forming part of these territories specified in section 1 or as case may be subsection 2 of this section shall be included in either dominion without consent of that dominion. बहुत बड़ी बात है, देखिए. No area not forming part of these territories, no area not forming part of these territories specified in subsection 1 or as case may be subsection 2 of this section shall be included in either dominion without consent of that dominion. हमने जो ये डोमिनियन दिया है, ये जगह दी है, टेरिटरी का नाम दिया है, इसमें इसके अलावा जो भी जगह होंगी बिना रेफरेंडम के, बिना लोगों की मर्जी से इसमें शामिल नहीं होंगी. लोगों की मर्जी, पब्लिक की मर्जी, जिसको रेफरेंडम कहते हैं, आने के लिए आवश्यक होगी. आगे चलें. बी में 3B, नो एरिया which forms part of territories specified in said subsection or as case may be said subsection 2 or which has after appointed day been included in either dominion shall be excluded from that dominion without consent of that dominion. इसका उल्टा भी कह रहा है कि पहले तो जो टेरिटरी नहीं थी उसमें अगर आना है इस डोमिनियन में तो उनको पब्लिक का रेफरेंडम कराना होगा, और अगर जाना है वहां से, उस क्षेत्र से जाना भी यदि है कि हम नहीं रहना चाहते इसमें, तो भी पब्लिक का रेफरेंडम कराना होगा. कितनी अच्छी बात है, कहने की बात है, बहुत पावरफुल बात है. पब्लिक को ये सब पता नहीं है, इसलिए बस गलत फहमी के शिकार होते रहते हैं. आगे चलिए 4 में 3-4 में क्या कहता है. सबसेक्शन 3 सेक्शन 3 2 सबसेक्शन 4 without prejudice to generality of provisions of subsection 3 of this section, nothing in this section shall be construed as preventing accession of Indian states to either of new dominions. दोबारा पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी. Without prejudice to generality of provisions of subsection 3 of this section, nothing in this section shall be construed as preventing accession of Indian states to either of new dominions.
आमतौर पर इसमें ये कहा गया है कि जो भी इसके अंदर हम प्रोविजन दे रहे हैं, जो भी नियम आर्टिकल डाल रहे हैं, सेक्शन डाल रहे हैं, इसमें किसी को भी कोई रुकावट नहीं होगी कि जो ये इंडियन स्टेट्स हम बनाए हैं इसमें कौन किसमें चाहता है, इसमें जाना है जाओ, कोई रुकावट नहीं है। आप पूरा स्वतंत्र हैं जितने भी स्टेट्स हैं कि आप इस डोमिनियन में जाना चाहते हो या उस डोमिनियन में जाना चाहते हो, हमारी तरफ से फ्रीडम है। अब भी चलिए सेक्शन 3 में, एज फ्रॉम अपॉइंटेड डे, 15 अगस्त 47 से आगे, प्रोविंस ऑफ बंगाल, बंगाल और असम की बात कर रहे हैं, प्रोविंस ऑफ बंगाल एज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 1935 के अधिनियम के हिसाब से जो बंगाल का प्रोविंस बना 1935 भारत सरकार एक्ट के हिसाब से, वो अब बंद, वो अब नहीं होगा, shall cease to exist. Province of Bengal as constituted under Government of India Act 1935 shall cease to exist. अब वो नहीं रहा, there shall be constituted in lieu thereof, उसके बदले में हम क्या कह रहे हैं, there shall be constituted in lieu thereof two new provinces, दो नए क्षेत्र बनेंगे, प्रोविंसेस बनेंगे, जिनके नाम होंगे टू बी नोन रेस्पेक्टिवली एज ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल, दो क्षेत्र बनाए जाएंगे। वो जो क्षेत्र था आपका बंगाल की जगह, जो भारतीय अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935 में जहां बंगाल नाम था, उसके दो हिस्से हो जाएंगे, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल, ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल। ये है 3(1) सेक्शन 3(1) ए एंड बी। अभी चलते हैं 2 में क्या कहता है ये आगे, 3(2) में, 3(2) इफ वेदर बिफोर और आफ्टर, इफ वेदर बिफोर और आफ्टर पासिंग ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट से पास होने से पहले या पश्चात, बट बिफोर अपॉइंटेड डे, लेकिन 1947 15 अगस्त से पहले, बट बिफोर अपॉइंटेड डे गवर्नर जनरल डिक्लेयर्स दैट majority of valid votes cast in referendum which at date of passing of this act is being or has recently been held in that behalf under his authority in district of Sylhet, Sylhet, are in favor of district forming part of new province of East Bengal, then as from that day part of province of Assam shall, in accordance with provisions of subsection 3 of this section, form part of new province of East Bengal. क्या कहता है, जो रेफरेंडम कराया गया है इसके लिए गवर्नर जनरल द्वारा यह घोषणा की जाती है कि ये जो असम के नाम की जगह है वो ईस्ट बंगाल में हो जाएगी। इस बीइंग, दोबारा सुन लीजिए ताकि क्लियर हो जाए। इफ वेदर बिफोर और आफ्टर, देखिए हिंदी में मैं इतना अच्छा समझा नहीं पाऊंगा और इसलिए माफ करना, मैं क्षमा चाहता हूँ कि इंग्लिश में थोड़ा जोर ज़्यादा दे रहा हूँ। इफ, क्योंकि एक्ट इंग्लिश में लिखा है तो इंग्लिश में ज़्यादा अच्छा पढ़ा जा सकता है, हिंदी में नहीं अच्छा पढ़ा जा सकता, इस बात को समझ लीजिए। हिंदी में लिखा होता तो बेहतर एकदम समझ जाता। इफ वेदर बिफोर और आफ्टर पासिंग ऑफ दिस एक्ट बट बिफोर अपॉइंटेड डे गवर्नर जनरल डिक्लेयर्स दैट majority of valid votes cast in referendum which at date of passing of this act is being or has recently been held in that behalf under authority in district of Sylhet are in favor of that district forming part of new province of East Bengal, then as from that day part of province of Assam shall in accordance with provision of subsection 3 of this section form part of new province in East Bengal. जो रेफरेंडम कराया गया उसके हिसाब से घोषित किया जा रहा है कि वो जो डिस्ट्रिक्ट जो पहले थी आपकी असम की, उसको जगह हम इसको ईस्ट बंगाल में मिला रहे हैं, ये कहते हैं। और इससे अब आगे चलते हैं
नंबर 3 में क्या कहते हैं, बाउंड्रीज ऑफ न्यू प्रोविंसेस aforesaid, जैसे ऊपर दिए गए इनकी boundaries of new provinces as aforesaid, and in event mentioned in subsection 2 of this section, boundaries after appointed day of province in Assam shall be such as may be determined whether before or after appointed day by award of a boundary commission appointed or to be appointed by Governor General in their behalf, but under boundaries as so determined. अब जो नए प्रोविंस बन रहे हैं इनकी बाउंड्री का फैसला किया जाएगा। जो बाउंड्री कमीशन बनेगा, बाउंड्री आयोग बनेगा, वो फैसला करेगा कि 15 अगस्त 47 से पहले जो अपॉइंटेड डे है उसके बाद प्रोविंस ऑफ असम के बारे में फैसला किया जाए कि इसकी कौन सी बाउंड्री है जो कि अपॉइंटेड डे से पहले या बाद में होंगी। इनका अवार्ड होगा बाउंड्रीज का कमीशन द्वारा by the Governor General of that we have, but until boundaries are so determined. Boundaries of new provinces of aforesaid and in event mentioned in subsection 2 of this section, boundaries after appointed day of province of Assam shall be such as may be determined whether before or after appointed day by award of boundary commission appointed or to be appointed by Governor General in their behalf, but until then, until boundaries are so determined, ये फैसला हमारा कमीशन करेगा, बाउंड्री कमीशन 1947 15 अगस्त के बाद वो जो करेगा, लेकिन तब तक ये हो माना जाएगा। वो क्या माना जाएगा? वो ये कहता है, Bengal districts specified in first schedule to this act, 7वें schedule लगे होंगे। Bengal district specified in first schedule to this act, together with in event mentioned in subsection 2 of this section, Assam district of Sylhet shall be treated as territory which are to be comprised in new province of East Bengal. फिर पढ़ता हूँ, Bengal districts specified in first schedule to this act, 7वें schedule लगे हैं इसके, together with event mentioned in subsection 2 of this section, Assam district of Sylhet shall be treated as territories which are to be comprised in new province of East Bengal. असम का जो ये क्षेत्र है, डिस्ट्रिक्ट है, इसकी जो एरिया है वो ईस्ट बंगाल के प्रोविंस में आएगा। Remainder of territories comprised at date of passing of this act in province of Bengal shall be treated as territories which are to be comprised in new province of West Bengal. Remainder of territories comprised at dates of passing of this act in province of Bengal shall be treated as territories which are to be comprised as new province of West Bengal. जैसे असम वाला उन्होंने कहा कि ईस्ट बंगाल में आएगा, उसी तरह से बाकी जो भी क्षेत्र बचे उसके अंदर बंगाल के अंदर वो सब वेस्ट बंगाल में माने जाएंगे। इसके बाद कहते हैं, event mentioned in subsection 2 this section, district of Sylhet shall be excluded from province of Assam, और असम में से जो डिस्ट्रिक्ट सिलहट है उसको हटा दिया जाएगा, वहां से असम के अंदर नहीं होगी। ये है इसका सेक्शन। और इसके बाद एक और वो जो कहता है, इन दिस सेक्शन, इस फॉर्म में कहता है, इन दिस सेक्शन एक्सप्रेशन अवार्ड को परिभाषित किया है, means relation to a boundary commission, decision of chairman of that commission contained in this report to Governor General at conclusion of commission's procedure line. अभी मेरे बीच में कुछ चीज़ें ऐसी आ रही हैं जो शायद मैंने पहले बतानी चाहिए थी, मुझसे भूल गई। इसका देखता हूँ इंडेक्स में अगर दिया हुआ है तो पहले मैं थोड़ी इंडेक्स की बात करूँ आपसे, क्योंकि ऐसे मैं सीधा शुरू कर दिया है, कोई बात नहीं है। आई जस्ट सी कि इसमें कुछ है, इंडेक्स दिया है कि नहीं है, एक मिनट देख लूँ मैं।
क्योंकि इंडेक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए था कि यहाँ इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 इंडेक्स है। इसमें जरा मैं बता देता हूँ आपको अरेंजमेंट ऑफ सेक्शंस। सेक्शन में क्या एक्चुअली दिया था, ये थोड़ा क्लियर हो जाए, कंफ्यूजन ना रहे। देखिए सेक्शन 1 है न्यू डोमिनियंस का। इस एक्ट में न्यू डोमिनियंस सेक्शन में जो डिफाइन हम कर चुके हैं। सेक्शन 2 में टेरिटरीज ऑफ न्यू डोमिनियंस, नए क्षेत्रों की टेरिटरीज के बारे में कहा गया 2 में। बंगाल एंड असम सेक्शन 3 जो हम अभी पढ़ रहे थे, सेक्शन 3। सेक्शन 4 इज पंजाब, so section 1 new dominions, section 2 territories of new dominions, section 3 बंगाल and असम, section 4 is पंजाब, अभी पंजाब के बारे में बात करेंगे। section 4 is पंजाब, then section 5 is governor general of new dominions, section 6 is legislation for new dominions, फिर 7 है consequences of setting up of new dominions, then 8 had temporary provision as to government of each of new dominions, temporary provisions 8 में। 9 है orders for bringing this act into force 9 में, और 10 है secretary of states services etc, और section 11 Indian armed forces, section 12 British forces in India, section 13 naval forces, section 14's provisions as to Secretary of State and Auditor of Indian Home Accounts, and section 15 legal proceedings by and against the Secretary of State, 16 add-on, 17 is diverse jurisdiction, section 18 is provisions as to existing laws, 19 is interpretation, and 20 is short title, and schedules जो लगे हैं साथ में, first schedule, second schedule, third schedule. First schedule Bengal district provisionally included in new province of East Bengal. Second schedule districts provisionally included in new province of West Punjab. And third schedule modifications of Army Act and Air Force Act in relation to British force. This is index. Going back to contents, we already gone to article 1 or section 1, section 2, section 3 we have deliberated. Then section 3 was Bengal and Assam. Now we are jumping over to section 4. अभी हमने सेक्शन 3 हो गया। इसमें लास्ट में कह रहा था इन दिस सेक्शन एक्सप्रेशन अवार्ड मीन्स in relation to boundary commission, decision of chairman of that commission contained in his report in the Governor General at the conclusion of commission's proceeding. अवार्ड का मतलब समझाया गया है, बाउंड्री कमीशन जो देगा उसके जो फैसले होंगे उसके चेयरमैन के, अध्यक्ष के, जो भी रिपोर्ट गवर्नर जनरल को देगा उसकी प्रोसीडिंग्स ही सारे उसके पेश करेगी और वो डिसाइड करेगा, फैसला होगा अवार्ड क्या होगा। ये हमने बंगाल और असम के में बताया। सेक्शन 3 में बंगाल और असम, एक तरफ असम खत्म करके उसको ईस्ट में डाल दिया गया और दूसरी तरफ बंगाल। अब चलते हैं 4 में, सेक्शन 4 एज फ्रॉम अपॉइंटेड डे, सेक्शन 4 सेक्शन 4। इसमें ए में कहते हैं प्रोविजन प्रोविंस ऑफ पंजाब constituted under Government of India Act 1935 shall cease to exist। देखिए यहाँ भी पंजाब को समाप्त कर दिया गया। पहले प्रोविंस ऑफ पंजाब as constituted under Government of India Act 1935 shall cease to exist, and B there shall be constituted 2 new provinces। पंजाब का नाम खत्म करके 2 नए प्रोविंसेस बनाए जा रहे हैं, to be known respectively as West Punjab and East Punjab। देखिए वहाँ बंगाल में 2 हुए और यहाँ पंजाब में 2 हो रहे हैं, वेस्ट पंजाब एंड ईस्ट पंजाब। Boundaries of said new provinces shall be such as may be determined। देखिए बाउंड्रीज ऑफ
Boundaries of said new provinces shall be such as may be determined, whether before or after appointed day by award of boundary commission appointed or to be appointed by Governor General in that behalf, but until boundaries are to be determined. वही चीज पैरल लाई गई है यहाँ पे, सेम थिंग व्हाट वाज एक्सप्लेन देयर फॉर बंगाल इज बीइंग एक्सप्लेन फॉर पंजाब. सेम टिपिकल डिजाइन यू कैन से, उसी हिसाब से उसी पैटर्न पे जो पहले कहा गया बंगाल के लिए और उसके लिए दो प्रोविंस बना दिए गए, इसी प्रकार यहाँ पंजाब का नामकरण करके दो प्रोविंस बनाए जा रहे हैं. और वो क्या होंगे जब तक बनते नहीं है, बाउंड्री कमीशन बनाता नहीं है, वो नीचे दिए गए हिसाब से लिखा जाएगा. Until boundary commission awards something following consideration following description work. नीचे जो दिया गया है वो बताया जाएगा. और वो क्या दिया गया है हम देखते हैं पंजाब के बारे में. ए districts specified in second schedule. अभी जो मैंने schedule बताए हैं आपको, districts specified in second schedule to this act shall be treated as territories to be comprised in new province of West Punjab. सेकेंड स्केड्यूल में, दूसरे स्केड्यूल में डिस्ट्रिक्ट जो दी गई हैं उनको माना जाएगा कि दो टेरिटरीज हैं, जो क्षेत्र हैं वो बने हुए हैं न्यू प्रोविंसेस ऑफ वेस्ट पंजाब के. वेस्ट पंजाब को डिफाइन किया है इसमें टेम्पोरली कि जो सेकेंड स्केड्यूल में दिया गया है उनको मान लिया जाएगा, उसी तरह से उनका व्यवहार किया जाएगा उनके साथ, जिसको आप कह सकते हैं प्रोविंस ऑफ वेस्ट पंजाब. एंड और बी में रिमाइंडर ऑफ टेरिटरीज, जो बाकी बचे क्षेत्र हैं उसी में पंजाब में रिमाइंडर ऑफ टेरिटरीज कंप्राइज्ड इन as on date passing of this act in province of Punjab shall be treated as territories which are to be comprised in new provinces of East Punjab. बाकी टेरिटरीज को ईस्ट पंजाब कहेंगे. अब आगे चलिए, इसमें तीसरे में क्या कहता है, इसी के तीसरे में सेक्शन में वही पैरेट चले. इन दिस सेक्शन एक्सप्रेशन अवार्ड मीन्स, सो वही अवार्ड का सेक्शन यहाँ भी कह रहा है. इन दिस सेक्शन expression award means in relation to boundary commission decision of chairman of that commission contained in his report to Governor General at conclusion of commissions. So वही रिपीटेशन आ रही है, नई बात नहीं है. चलते हैं आगे, सेक्शन 5 के बात करेंगे. इसका टाइटल है गवर्नर जनरल ऑफ न्यू डोमिनियंस. सेक्शन 5 में गवर्नर जनरल की बात हो रही है. For each of new dominions, there shall be a Governor General who shall be appointed by His Majesty and shall represent His Majesty for purpose of government of dominion. जो नए क्षेत्र, नए देश दो बनाए जा रहे हैं, इन दोनों के गवर्नर जनरल होंगे, जिनको हमारे राजा यूके के किंग हिज मैजेस्टी उनको अपॉइंट करेंगे गवर्नर जनरल्स को. एंड शैल रिप्रेजेंट हिज मैजेस्टी, और वो उनके नुमाइंदे होंगे फॉर पर्पस ऑफ दिस डोमिनियंस. ये गवर्नर जनरल्स की बात चल रही है, नए डोमिनियंस की, नए देशों की बात चल रही है. इसमें क्या कहते हैं, बशर्ते प्रोवाइडेड दैट unless and until provision to contrary is made by a law of legislature of either of new dominions, same person may be governor general of both new dominions. कहते हैं जब तक ये नए देश अपने अपने विधायिका द्वारा, ये दोनों देश until provided until unless provisions of contrary is made, इसके अलावा जब तक इनके अपने लोग वहाँ स्टार्ट नहीं कर देते, इनके लेजिस्लेशन के द्वारा, इन देशों के लेजिस्लेशन के द्वारा, नए देशों के लेजिस्लेशन के द्वारा, तब तक ये हमारे जो आदमी हैं provided unless and until provision to contrary is made
by a law of legislature of either of new dominions, same person may be governor general of both new dominions. हम जो एक भी एक्ट बना रहे हैं तो वो भी दोनों पे गवर्नर जनरल कहा जा सकेगा जब तक कि उनके अपने सामने नहीं आते। उसके बाद टाइटल 6 सेक्शन में लेजिस्लेशन फॉर न्यू डोमिनियंस, लेजिस्लेशन फॉर न्यू डोमिनियंस। अब यहाँ से बात शुरू होती है मजबूत, कह सकते हैं आप, स्टार्ट हियर फ्रॉम, because we are talking about legislation for new dominions. 6.1 Legislature of each of new dominions shall have full power to make laws for that dominion, including laws having extra territorial operation. अब यहाँ वो कहते हैं ये दोनों देश जो डोमिनियन बन रहे हैं इनको पूर्ण शक्ति होगी अपने एरिया के, अपने देश के नियम बनाने की, और वो नियम चाहे उनके देश से बाहर भी क्यों ना लागू होते हों। Legislature of each of new dominions shall have full power to make laws for that dominion, including laws having extra territorial operations. शक्ति दे दी गई है भाई, यहाँ पर जाइए आप भारत, अब इंडिया पाकिस्तान अपने लेजिस्लेचर को संभालिए, अपने देश को संभालिए, नियम कानून बनाइए, आपके देश पे लागू हो या आपके अथॉरिटी के हिसाब से देश से बाहर भी लागू हो। देश से बाहर का मतलब होता है कुछ एरिया जो देश से बाहर, जैसे बराई नए जैसे आपके एम्बेसीज वहाँ स्टार्ट होते हैं, कुछ और होता है तो उस बात से जा सकते हैं, इसमें यहाँ आवश्यकता नहीं बताने की उसकी। अब 6B में क्या कहते हैं, 6.2 इसमें लिखा है 6.2 नो लॉ and no law and no provision of any law made by legislature of either of new dominions shall be void or inoperative on ground that it is repugnant to law of England or to provisions of this law or any existing or future act of Parliament of United Kingdom or to any order, rule or regulation made under any such act, and powers of powers of legislature of each dominion include power to repeal or amend any such act, order, rule or regulation insofar as it is part of law of dominion. दोबारा पढ़ता हूँ उसको, चश्मा भी बहुत तंग कर रहा है। No law and no provision of any law made by legislature of either of new dominion shall be void or inoperative on ground that it is repugnant to law of England. वो कहना चाहते हैं कि नए कानून जो आप बनाए, नए जो भी नियम बनाए, दोनों देश बनाए, चाहे भारत बनाए या पाकिस्तान अपने लिए बनाए, अपने नियम अधिनियम बनाए, वो वैलिड होंगे। इसलिए वो वैलिड नहीं होंगे कि ये पाकिस्तान, ये अंग्रेज यहाँ है, इनके रिप्रेजेंटेटिव यहाँ है, नहीं, ऐसा नहीं। उन्होंने कहा कि आपको पूर्ण हक है, आप उन अधिनियमों को पकड़ लीजिए और साथ लेके जो समाधान लाइए। ये दोनों के जो भी नियम होंगे वैलिड होंगे, उसे ये नहीं कहा जा सका कि इनवैलिड है, ऐसा नहीं होगा। और वो चलेंगे भी, चलाए भी जाएंगे, अप्लाई भी होंगे, इनऑपरेटिव नहीं होंगे कि उनको अप्लाई नहीं किया जा सकता। ये इंग्लैंड के कानून के खिलाफ भी हो तब भी वो चलेंगे आपके देश में, हम उसे कुछ नहीं कहेंगे, हमारे देश के कानून से आपको कुछ लेना देना नहीं है। ये वो साहब कह रहे हैं इसमें, आपके कानून आप जानिए, हमें क्या मतलब है। सही बात है। इसके बाद और वो तो मैंने कहा not repugnant to English law and or to provisions of this or any existing or future act of Parliament। इस कानून के हिसाब से या आगे वाले जो भी कानून आएंगे हमारे इंग्लैंड के,
उनके हिसाब से मिले या ना मिले, आपके नियम जो बनाए आप, हमें कोई लेना देना नहीं है। या or to provisions of this or any existing or future act of Parliament of United Kingdom or to any order, rule or regulation made under any such act, and powers of legislature of each dominion include power to appeal, oppose repeal or arm such actions. जी, तो समझ आया कि नहीं? दोबारा पढ़ देता हूँ आपके हिसाब से, क्योंकि लंबे लंबे पैरा होते हैं कानून में, बड़ी प्रॉब्लम होती है, बड़े लंबे पैरा होते हैं, वो एक आम आदमी के समझ में नहीं आते हैं, थोड़ा सोचना पड़ता है, ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। इसलिए मैं दोबारा पढ़ता हूँ थोड़ा थोड़ा क्लियर हो जाए। देखिए इसमें कहते हैं, नो लॉ एंड नो प्रोविजन ऑफ एनी लॉ, कोई नियम और कोई भी नियम के अंदर जो नियम है, जो भी नो लॉ एंड नो प्रोविजन ऑफ एनी लॉ made by legislature of either of new dominions shall be void or inoperative on ground that it is repugnant to law of England or to provisions of this or any existing or future act of Parliament of England or to any order. साफ साफ ये कह रहे हैं, आप जो भी नियम बनाएंगे, आपका मतलब इंडिया पाकिस्तान के अलग अलग देशों से है, आप अपने नियम अपने लिए बनाइए, खुशी से बनाइए, जो बनाइए उनको चलाइए, लेकिन वो इसलिए वैलिड नहीं कहे जा सकेंगे, इसलिए इनवैलिड नहीं कहे जा सकेंगे, वो इंग्लैंड के कानून से नहीं मिलते। आपके नियम हमारे कानून से मिले ना मिले, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। आज जो हमारे कानून है या जो हमारे कानून बाद में होंगे इंग्लैंड के कानून, उन कानूनों से भी आपके नियम मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता। आपकी मर्जी है, हमारे नियम से मिलाएं ना मिलाएं, हम उसमें कोई नहीं कहते आपको। हमारे जो भी ऑर्डर हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उन्हीं कानूनों के अंदर हैं जो हमारे कानून हैं। आप उसको नहीं मानिए, आपकी इच्छा में कोई मतलब नहीं है इस बात से, ये वो कह रहे हैं। उसमें कानून भी है, उसमें ऑर्डर भी है, रूल भी है, रेगुलेशंस भी हैं, जो भी इंग्लैंड में चल रहा है उससे आपको कोई मतलब नहीं है, दोनों देशों को, पाकिस्तान को भी और इंडिया को भी। इसमें वो साफ साफ कह रहे हैं, सिंपल सी बात है। आगे चले अब थोड़ा, आगे कहते हैं गवर्नर जनरल, इसे है गवर्नर जनरल 6(3) है, सेक्शन 6(3), गवर्नर जनरल of each of new dominions shall have full power to assent in His Majesty's name to any law of legislature of that dominion and so much of any act as related to disallowance of laws by His Majesty or Governor General of each of new dominions shall have full power to assent in His Majesty's name to any law of legislature of that dominion and so much of any act as relates to disallowance of law by His Majesty or reservation of laws for signature or significance of his His Majesty or reservation of laws for significance of His Majesty's pleasure thereon, or suspension of reposition of law until signification of His Majesty's pleasure thereon shall not apply to laws of legislature or other of new dominions. गवर्नर जनरल को पूरा अधिकार दिया गया है कि हमारी मजिस्ट्री के नाम में उनको देखें, लेजिस्लेचर्स को, उस डोमिनियन में जो बन रहे हैं, जिसमें चाहे बेशक हमारे मजिस्ट्रीज के नियम को ना माना गया हो या माना गया हो दूसरे तरीके से, यह देखा है भी, हमें अभी नहीं कुछ करना है, हमारा काम खत्म हो गया है। चलिए खैर, वो जनरल चीजें लिखी हैं इसमें, आगे चलते हैं।
मतलब आपको फुल फ्रीडम दी गई है कि आप अपने कानून बनाएं ना बनाएं, जैसे बनाएं। जरूरी नहीं है कि हमारे कानून के हिसाब से आप बनाएं। आप फ्री हैं अपने कानून बनाने के लिए, आप बनाइए। तो हमें कोई चीज़ें आपको हमने सहायता के लिए आपकी एक दे दिया है मोटिवेशन, सब जानते हैं क्या होने है। अब आगे चलते हैं, 4 में चलते हैं, इस सेक्शन 4 में। No act of Parliament of United Kingdom passed on or after appointed day shall extend or be deemed to extend to either of new dominion as part of laws of the dominion. Yes, no order. mm, No act of Parliament of United Kingdom passed on or after the appointed date shall extend or be deemed to extend to either of new dominions as part of law of that dominion, unless it is extended therefore thereto by in law of legislation of dominion. का ब्रिटिश की पार्लियामेंट का प्रयास पास किया हुई उस अपॉइंटेड डे 15 अगस्त 1947 के बाद माना जाएगा। हमारे कानून जो भी 1947 के बाद यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट पास करेगी, 15 अगस्त 1947 के बाद वो इन देशों पे लागू नहीं होंगे, या ऐसा नहीं माना जाएगा कि लागू होते हैं, चाहे वो इंडिया हो या पाकिस्तान हो। As part of law of that dominion unless it is extended thereto by a law of legislature of dominion। यहाँ से एक तरह से इन्होंने अपना काम करना शुरू किया, हमारे लोगों ने, हमारे नेताओं ने, और जाके ऐसा होगा, नहीं माना जाएगा ब्रिटिश कानून। अब चलिए आगे 5 में चलते हैं। नो ऑर्डर इन काउंसिल, नो ऑर्डर इन काउंसिल made no order in council made on or after appointed day under any act passed before appointed day, and no order, rule or other instrument made on after the appointed day made in any such act by United Kingdom minister or other authority shall extend or be deemed to extend to either of new dominion as part of law of that land। क्या कहते हैं देखिए, इसमें वो कहते हैं नो ऑर्डर इन काउंसिल मेड, प्री काउंसिल का मतलब काउंसिल ऑफ प्री पर्स, प्रीवी काउंसिल इट इज कॉल्ड। नो ऑर्डर इन काउंसिल मेड ऑन और आफ्टर appointed day under any act passed before। फिर भाई कोई भी प्री पर्स कानून या कोई भी कानून पास हुआ है इस अपॉइंटेड डे के बाद में, कोई पास कर सकते हैं। फिर मैं बोल देता हूँ नो ऑर्डर इन काउंसिल मेड ऑन और आफ्टर अपॉइंटेड डे अंडर एनी एक्ट शैल पास, कोई भी ऑफ नो ऑर्डर इन काउंसिल मेड ऑन after appointed day under any act passed before appointed day or, or तो फिर मैं पढ़ता हूँ नो ऑर्डर इन काउंसिल मेड ऑन और आफ्टर
appointed day under any act. सो काउंसिल में जो भी ऑर्डर हुआ है वो कोई लागू नहीं होगा। जिस दिन 15 अगस्त 47 हो उसके बाद में वो कहीं के लिए भी पास किया वहाँ लागू नहीं होगा। समझे आप सब? कोई भी नियम कानून जो उस दिन 15 अगस्त के बाद वहाँ बनाया गया है इन डोमिनियंस पे लागू नहीं होगा जब तक कि वो स्वयं न उसको ले लें। सिवाय देखिए पहुंचे ठीक है, लेकिन यू हैव टू सी दैट व्हाट प्रोविजंस आर मेड इन दिस एक्ट इज मोर इम्पोर्टेंट। चले नंबर 7 पे इसमें एक और देख सकते हैं, पावर रेफर टू इन सब सेक्शन I section of this section extends to making of laws limiting for future powers of legislature or dominion. चलिए अब आगे चलते हैं, इसमें कुछ तकरार नहीं। 7 पे आते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सेटिंग अप ऑफ न्यू डोमिनियन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। 7 में आते हैं, 7 सेक्शन 7 एज फ्रॉम अपॉइंटेड डे, मतलब जैसा 1947 15 अगस्त से हिज मैजेस्टी गवर्नमेंट in United Kingdom have no responsibility as respects government of any of as from appointed day. No His Majesty Government of UK have no responsibility as respects the government of any of territories which immediately before that day were included in British India. बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं चाहिए। फिर रिपीट कर देता हूँ एक बार। From appointed day, His Majesty Government in United Kingdom have no responsibility to ensure थोड़ा पेशेंस से पढ़ना पड़ता है। As from appointed day, His Majesty Government in United Kingdom have no responsibility as respects the government of any of territories which immediately before that day were included in British India. ये दोनों क्षेत्र जो हम छोड़ रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान, ये कैसे समस्या रखते हैं आप जानिए। How the administrators individuals are some right and those and some संतालीस के बाद
हम्म, चलिए ये फिर पढ़ते हैं। sovereignty sovereignty of His Majesty over Indian states lapses। जो शक्ति है His Majesty की भारत के ऊपर वो खत्म, and with it और उसके साथ all treaties and agreements in force at date of passing of the status sovereignty of His Majesty over Indian states lapses, and with it all treaties and agreements in force at date of passing of this act between His Majesty and rulers of India states, all functions exercised by His Majesty at that date with respect to Indian states, all obligations of His Majesty's existing at that date towards Indian states or rulers thereof, and all powers, rights, and authority or jurisdiction exercised by His Majesty. Important है। Alright. कहते जी इस तारीख के बाद हमें लेना देना कुछ नहीं आपसे, हमारे राजा को, इंग्लैंड के राजा को आपसे कुछ लेना देना नहीं है किसी बात पे। आपका काम आप जानिए, आपकी जिम्मेदारी आप जानिए, इंडिया में क्या होता है और क्या करते हैं। हम आपको सारे अधिकार छोड़ के जा रहे हैं, हमारे कोई अधिकार नहीं है, हमारी सारी शक्तियाँ, हमारे अधिकार, हमारी कह सकते हैं अथॉरिटी, हमारे क्षेत्र आपके जो थे, और उसके बाद जो भी हमारी संधियाँ थी, ग्रांट्स थे, सब कुछ महासलाम, सब कुछ की छुट्टी। फिर मैं पढ़ता हूँ, थोड़ा क्लियरिफिकेशन हो जाएगी, कंफ्यूजन रहता है, लंबे लंबे प्यारा है। sovereignty, SUZERAINTY, sovereignty of His Majesty over Indian states lapses, and with it all treaties and agreements in force at date of passing of this act। सब समाप्त हो गया आपसे, जो भी हमारे एग्रीमेंट्स थे, ट्रीटीज थी, हमारी शक्ति आपके ऊपर समाप्त हो जाती है इस कानून के दिन। Between His Majesty and rulers of Indian states, all functions exercisable by His Majesty at that date with respect to Indian states, all obligations of His Majesty existing at that date towards Indian states or rulers thereof, and all powers, rights, authority, or jurisdiction exercisable by His Majesty at that date in or in relation to United States by treaty, grants, uses, sufferance or otherwise। जो भी हमारा आपके साथ था, एग्रीमेंट, ट्रीटी थी, हमारे राइट्स थे, अथॉरिटी थी, पावर्स थी, जुरिस्डिक्शन था आपके ऊपर, दोनों के ऊपर,
हम सबको जो भी ट्रेटी थी, ग्रांट्स, यूजेस, सफर, सबको हम छोड़ के जा रहे हैं। आप जानिए, आपका काम जानिए। अच्छी बात है। आगे चलते हैं सी में। ऐसा ऐसा चल रहा है, आराम से समझाना चाहिए ना, एक कंफ्यूजन दूर करना है आप लोगों का। गलत फहमी डाल दी गई है, उल्टा सीधा बोल बोल के ये हुआ और वो हुआ, सब नहीं है। There relapse also any treaties or agreements in force at that date from 15 August 47 is between His Majesty and any person having authority in tribal areas, and obligations of His Majesty existing at that date to any such persons or with respect to tribal areas, and all powers, rights, authority, or jurisdiction exercisable at that day of by His Majesty in our relation to ट्राइबल एरियाज बाय ऑथोरिटी ग्रांट्स। मीन्स वही चीज जो उन्होंने कहा है, कुछ क्षेत्रों पे हमारे अधिकार खत्म हमारे मजिस्ट्री के, और वही चीजें वो कह रहे हैं जो दूसरे भी वहाँ एरियाज हैं, ट्राइबल एरियाज हैं और दूसरे हैं, जहाँ पर भी आपके क्षेत्र में हमारा राज था, हमारे अधिकार थे, हमारी पावर राइट्स थी, अथॉरिटी थी, वो सब हम छोड़ रहे हैं। हमें उन बातों से कुछ लेना देना नहीं रहेगा। 15 अगस्त 1947 के बाद। अब ठंड लग रही है, थोड़ी टोपी लगा दे भाई, अभी तो ठंड लग रही है तो भाई, बुखार हो जाएगा, जुकाम हो जाएगा, क्या फायदा है। आगे चलते हैं। प्रोवाइडेड दैट, बशर्ते, प्रोवाइडेड का मतलब बशर्ते आता है। आगे क्या कहते हैं देखिए, सब अधिकार छोड़ दिए उन्होंने, अब वो क्या कहते हैं। प्रोवाइडेड दैट, बशर्ते, notwithstanding anything in paragraph B और पैराग्राफ सी ऑफ दिस सबसेक्शन, जो हमने ऊपर दिया है बी और सी में, उसके होने के बावजूद effect shall as nearly as may be continue to be given to provisions of any such agreement as is therein referred to, which relates to customs, transit and communications, post and telegraphs or other like matters, until provisions in questions are denounced by ruler of Indian state or person having authority in tribal areas on one hand, or by dominion or provisions or other part thereof concerned on the other hand, or are superseded by subsequent agreement। ये तो ठीक है, हमने जो ऊपर कहा है बीसी में वो सब कहा है, लेकिन जब तक जो भी आपके रीति रिवाज हैं, कम्युनिकेशन की बातें, संचार की बातें हैं, पोस्ट एंड टेलीग्राफ की बातें हैं, दूसरी बातें हैं, जब तक आप लोग उनको रिजेक्ट नहीं करते, हमारे जो कानून वहाँ चले, आप लोग अनाउंस नहीं करते, रिजेक्ट नहीं करते, रिनाउंस नहीं करते एक रूलर हैसियत, रूलर के हैसियत के नाते, तब तक कोई बात नहीं है। लेकिन हमारी तरफ से कोई जबरदस्ती नहीं है, हम कुछ नहीं कहेंगे आपको, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें कहने का मतलब है खाली क्लैरिफिकेशन दिए जा रहे हैं बार बार, इसका उसका कहने का मतलब आप मानना है मानो, नहीं मानो नहीं मानो, हम तो जा रहे हैं, मतलब ये है, हमारा कोई लेना देना नहीं है। सिंपल सी बात तो यही है, हमारा कोई मतलब नहीं आपसे, आपको मानना है मानो, नहीं मानो आपके घर की बात है, हमें क्या मतलब। साफ शब्दों में तो यही है। अब चलें आगे, इसमें क्या कहते हैं, एसेंट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड यूके की जो पार्लियामेंट का जो भी हाँ है, assent of Parliament of United Kingdom is hereby given to omission from royal style and titles of word India Imperator, Indiae Imperator, and words Emperor of India, and to use issue by His Majesty for that purpose of His royal
proclamation under Great Seal of Realm। दोबारा सुन लीजिए, जरूरी है, क्योंकि इंग्लिश वैसी है, स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश है जो लीगल होती है, एक आम आदमी की समझ में नहीं आती, और सच पूछो तो वकीलों की समझ में भी एकदम नहीं आती है। सच तो यही है। Assent of Parliament of UK is hereby given to omission from royal style। यूके की पार्लियामेंट मंजूरी देती है अपनी कि रॉयल स्टाइल को ओमिट किया जाए। रॉयल स्टाइल को, जो शब्दों में टाइटल है उनको, इंडिया एम्परर है, खत्म किया जाए इम्परेटर, एम्परर ऑफ इंडिया खत्म किया जाता है, और हिज मैजेस्टी का जो उसके लिए इस रॉयल प्रोक्लेमेशन है अंडर ग्रेट सील ऑफ रियल्म है, इनको भी खत्म किया जाता है। अब आइए नंबर 8 पे 8 पे टेम्पररी प्रोविजंस क्या है। टेम्पररी प्रोविजन एज टू गवर्नमेंट ऑफ ईच ऑफ द डोमिनियन। तो ये नए देश जो दो बने हैं, इनके टेम्पररी क्या प्रोविजंस है वो देखिए। In case of each of new dominions, powers of legislature of dominion shall, for purpose of making provision as to constitution of dominion, be exercisable in first instance by constituent assembly of that dominion, and references in this act to legislature of dominion shall be constituted accordingly। दोनों जो देश बने हैं, डोमिनियन बने हैं, इनकी शक्तियां जो होंगी, इनके विधायिकाओं की, लेजिस्लेचर की जो बनाएंगे नए, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में फैसला होगा। जो भी दोनों के पहले जो बने फर्स्ट इंस्टेंस पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इनकी बन रही है, उसके जो भी काम करेगी वही करेगी। इन केस ऑफ ईच ऑफ दिस न्यू डोमिनियंस, पावर्स ऑफ लेजिस्लेचर of dominion shall, for purpose of making provisions as to constitution of dominion, be exercisable in first instance by constituent assembly of that dominion, and references in this act to legislature of dominion shall be constituted accordingly। इनकी constituent assembly अब जो भी करेगी अपने लिए करेगी आगे, और वही माना जाएगा legislature का काम जो constituent assembly करेगी, और उसी को वैसा ही माना जाएगा। ये टेम्पररी प्रोविजन है, क्योंकि आपकी पार्लियामेंट अभी बनी नहीं है। कहने का मतलब है प्री पार्लियामेंट पार्लियामेंट जो थी, प्री पार्लियामेंट पार्लियामेंट से पहले जो पार्लियामेंट एक तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है। अब ये दूसरे में वो क्या कहते हैं, एक्सेप्ट इन सो फार एज अदर प्रोविजंस इज मेड। Except in so far as other provision is made by or in accordance with law made by Constituent Assembly of Dominion under subsection 1 of this section, each of new dominions and all provinces and other parts thereof shall be governed as nearly as may be in accordance with Government of India Act 1935 and provisions of that Act, and of orders in council, rules, and other instruments made thereunder, shall, so far as applicable and subject to any express provisions of this Act, and with such omissions, additions, adaptations, and modifications as may be specified in order of governor, एक्सेट्रा। कह रहे कि भाई हमने जो कहा है, हमने जो अभी तक बताया है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बनेंगे आपके सारे कुछ, लेकिन दोनों देशों में जो भी बनेगा बाद में ठीक है, लेकिन जब तक ये सब नहीं होता है, आप चाहें
तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को 1935 वाले को जो रिपील हो रहा है या होगा, उसके हिसाब से आगे चल सकते हैं। जितना भी उसके करीब हो सके उस एक्ट में जो प्रोविजन दिए गए हैं, पूरा ना सही, अगर आप चाहते हैं उसके पास आसपास जाके अपना गाड़ी को आगे चला सकते हैं, लेजिस्लेटिव गाड़ी को। या इसके अलावा इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अलावा जो भी ऑर्डर्स हैं काउंसिल में, ऑर्डर्स एंड काउंसिल जिसको हम चार्टर वगैरह कह देते हैं, ऑर्डर्स एंड काउंसिल चार्टर कहा जाता है, जो भी चार्टर वगैरह हुए हैं, नियम कानून जो बने हैं या दूसरे इंस्ट्रूमेंट जो बने हैं कानून के हिसाब से, जो भी आप चाहें उसको अप्लाई कर सकते हैं। एक्सप्रेसली जो रिटर्न है, जो क्लियर दिए गए हैं, उनको आप लागू करें जब तक आपकी इच्छा है। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें कुछ हटा दें, कुछ डाल दें, वो भी आपकी मर्जी है। उसमें कुछ ऐड करना है, उसमें से निकालना है, ओमिट करना है, या कुछ स्वीकार करना है, उसको मॉडिफाई कर, जो भी आप करें, गवर्नर जनरल करें, उसके ऑर्डर के हिसाब से आप कर सकते हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको आप ला सकते हैं जब तक कि आपका पूर्ण रूप से तैयारी नहीं हो जाती। अब आगे चलते हैं। उसमें बशर्ता भी डाला है उसने बहुत, तो क्या डाला है बशर्ता देखते हैं। ये जो प्रोविजन दिए गए हैं, सेड प्रोविजंस शैल अप्लाई सेपरेटली इन रिलेशन टू ईच ऑफ न्यू डोमिनियंस। पर जो भी प्रोविजंस आपके होंगे अलग अलग होंगे दोनों देशों के। और नथिंग इन दिस सबसेक्शन शैल बी कंस्टिट्यूट एज continuing on or after appointed day any central government or legislature common to both new dominions। जो भी हमने ऊपर कहा है दोनों देशों के लिए अलग अलग कहा है, और इसमें से ये बिल्कुल नहीं माना जाएगा कि इस 15 अगस्त 47 के बाद एक कंटिन्यू कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं करेंगे। After appointed any central government or legislative common to both new said provisions shall apply separately in relation to each of new dominions, and nothing in this subsection shall be construed as continuing or after appointed day any central government or legislature common to both new dominions। मतलब जो भी आपके बने हुए नियम कानून वो पिछले वाले 1947 से पहले ये नहीं माना जाएगा कि आपके दोनों के कॉमन है, एक है, या कंटिन्यू करेंगे वो आगे, हम ऐसा नहीं मानते। आपको फैसला करना है। आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं और क्या कहता है। ये चीजें इसलिए बता रहा हूँ बहुत जरूरी है आपको जाननी, नहीं जानेंगे तो फंसेंगे आप। अभी बी में चलते हैं। अभी हम ये बता रहे थे आपको, इसमें बी देखिए। Nothing in this subsection shall be construed as continuing in force on or after appointed day any form of control by His Majesty's government in United Kingdom over spheres of new dominions or in any province or other parts। इसमें जो भी लिखा गया है उसको ऐसा नहीं माना जाएगा कि इस दिन के बाद 15 अगस्त 47 के बाद मेजेस्टी का कंट्रोल चल रहा है, बिल्कुल नहीं माना जाएगा। मेजेस्टी जो यूनाइटेड किंगडम की है और नए डोमिनियंस के ऊपर चल रहा है, नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। या किसी दूसरे राज्य में चल रहा है, नहीं होगा। या कहीं और भी नहीं होगा। ये आप खत्म हो गए हम आपसे। उसके बाद है सो मच ऑफ सेड प्रोविजंस एज रिक्वायर्स गवर्नर जनरल or any governor to act as his discretion or exercise his individual judgment nothing in this section shall be construed as continuing in force on or after appointed day any form of control
by His Majesty's government in the United Kingdom. Our affairs of new dominions or province or other parts ने बताया आपको. अभी आगे चलते हैं. So much of said provisions as requires Governor General or any governor to act in this in his discretion or exercise his individual judgment as respects any matter shall cease to have effect as from appointed day. जो भी गवर्नर जनरल ने फैसले लिए हैं पहले के, उनकी अपनी शक्ति के हिसाब से, लीगल अथॉरिटी के हिसाब से, उसके अपने खुद के जजमेंट, सब के सब रुक जाएंगे 15 अगस्त 47 के बाद. उनका प्रभाव नहीं होगा जो भी गवर्नर जनरल्स ने फैसले लिए होंगे. As from appointed day, जब भी मैं अपॉइंटेड डे बोलता हूँ तो 15 अगस्त 1947 सोच लीजिए, वही अपॉइंटेड डे है स्वतंत्रता आजादी का. As from appointed day, no provincial bill shall be reserved under Government of India Act 1935 for significance of His Majesty's pleasure, and no provincial act shall be disallowed by His Majesty thereunder. देखिए, कहते हैं एज फ्रॉम अपॉइंटेड डे नो प्रोविंशियल बिल शैल बी रिजर्व्ड अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 for significance of His Majesty's pleasure, and no provincial act shall be disallowed by His Majesty thereunder. इस अपॉइंटेड डे के बाद में जो भी प्रोविंशियल बिल आए उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से नीचे आए, significance of His Majesty's pleasure and no provincial act shall be disallowed. Well, this is the same continuation of that. Powers of federal legislature or Indian legislature under that act. Power of federal legislature or Indian legislature under that act as enforced in relation to each dominion shall in first instance be exercisable by Constituent Assembly of government and चलिए अब आप पढ़ लेते हैं, टाइम तो चलता रहेगा, आहिस्ता आहिस्ता पढ़े ताकि समझ आ जाए. जल्दी जल्दी पढ़ सकते थे लेकिन ऐसी इंग्लिश है कि जल्दी जल्दी में हिंदी बनाने में दिक्कत आती है. सर्दी बहुत है, बैठने में भी तकलीफ हो रही है. Powers of federal legislature or Indian legislature under that act as in force in relation to each dominion shall in first instance be exercisable by Constituent Assembly of Dominion of England. Power of federal legislature or Indian legislature under that act as in force in relation to powers of federal legislature or Indian legislature under that act as in force in relation to each dominion shall in first instance be exercisable by Constituent Assembly of Dominion in addition to powers exercisable by that assembly under section of this. Anyway, जो करेगी आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली करेगी
और आप दोनों देश अपने को संभालिए, आप आगे बढ़िए, हमारी सहायता आपको मिल रही है। अब आगे आई, any provision of Government of India Act 1935 which as applied to either of new dominions by subsection 2 of this section and orders therein referred to operates to limit power of legislature of that dominion shall unless and until other provisions made by accordance with law made by Constitutional Assembly of Dominion in accordance with provisions of subsection I of this section have like effects as law of legislature of Dominion, limiting for future power of that legislature. कोई भी आपने अगर लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट सन 1945 वाले से, कोई भी अगर आपने प्रोविजन से इस्तेमाल किया है, चाहे अपने पाकिस्तान में लगाया हो या इंडिया में लगाया हो, कहीं भी लगाया हो, आपकी मर्जी है, उसका ऑपरेशन ले सकते हैं आप चाहें तो इंडियन टैक्स से, and orders therein refer to operates to limit powers of legislature of that dominion unless until provisions is made by। कहने का मतलब है अगर आप जो इंडियन है जैसे 1935 है उसमें से आप चाहें ले लीजिए, उसको लगा लीजिए टेम्पररी पर्पस के लिए, जब तक कि आपकी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली आपका नया डॉक्यूमेंट नहीं तैयार कर देती है तब तक आप इसको यूज़ करें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे। मतलब कहने का ये है, बार बार एक ही बात बड़ा लंबा कर रहे हैं, कुछ नहीं है, एक ही सेंटेंस में आ सकता था। अभी चलो खैर सेक्शन 9 में आए, ऑर्डर्स फॉर ब्रिंगिंग दिस एक्ट इनटू फोर्स। यस, Governor General shall by order make such provision as appears to him to be necessary or expedient for bringing provision of this act into effective operation, for driving between new dominions and between new provinces to be constituted under this act, powers, rights, properties, duties, and liabilities of Governor General in Council or its case may be of relevant provinces which under this act are cease to exist. समझ ले, वही पावर बाद में यहाँ भी आ रही है। General shall by order make such provisions that appears as to him necessary expedient। गवर्नर जनरल जिस अपॉइंट किए जा रहे हैं अपने आप वो बनाएंगे कि इनको इफेक्ट में कैसे लाया जाए, इस कानून को, इंडिपेंडेंस एक्ट को कैसे इफेक्ट में लाया जाए, अपने आप बनाएंगे कानून। और डिवाइडिंग बिटवीन न्यू डोमिनियंस एंड बिटवीन प्रोविंसेस टू कॉन्स्टिट्यूशन अंडर दिस एक्ट, पावर, राइट, प्रॉपर्टी, जो भी अधिकार है, कर्म है, प्रॉपर्टी है, ड्यूटी है, लायबिलिटीज ऑफ गवर्नर कॉन्स्टिट्यूट काउंसिल और कैश में भी रेगुलेमेंट प्रोविजंस व्हिच अंडर दिस एक्ट आर टू सीज, जो भी इसमें है वो सब बंद हो जाएंगे, अपने आप चलाइए, कैसे चलाना है। एनीवे बात वहीं आ जाती है, बार बार एक ही बात। अगर आप चलिए अभी थोड़ा यूनिवर्सिटी में जाते हैं, क्या कहते हैं, for making omissions from additions to and adaptations and modifications of Government of India Act 1935 and orders of council rules and other instances thereafter in their application to separate new dominions। For removing difficulties arising in connection with transition of power of this act and for authorizing carrying out business on business of Governor General in Council between passing of this act and appointed day, otherwise than in accordance with provisions in that behalf of 9th schedule of Government of India 1925
चलिए हम आगे चलते हैं, ऐसे ही चलता रहेगा. For enabling agreements to be entered into and other acts done on behalf of either of new dominions before appointed day, authorizing continues carrying on for time being on behalf of new dominions or on behalf of any two or more said new provinces of services and activities previously carried on behalf of British India as a whole or on behalf of former provinces which those new provinces represent. फिर आप पढ़ रहे हैं एक बार आप. For authorizing, continued carrying on for time being on behalf of new dominion or on behalf of any two or more of said new provinces of services and activities previously carried on behalf of British India as a whole or on behalf of former provinces which those new provinces represent. वो कह रहे हैं आप करते हैं तो करते हैं, हम फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बात वही आ जाती है. For regulatory responsibility उनकी नहीं है. For regulating monetary system and any matter pertaining to Reserve Bank of India, and so far as it appears necessary or expedient in connection with any of matters aforesaid for varying or constitution powers of jurisdiction of any legislature, court, or other regulatory authority or other authority in new dominion and calculating a new legislature, courts, or other authorities therein. आप जो कर रहे हैं करो भाई, क्यों बाहर निकल जा रहे हो यार. खैर, बोलना है लिखा है तो क्या करें, इतना लंबे देने की जरूरत नहीं थी, बहुत तेज हो सकता था. New powers conferred by this section on Governor General shall in relation to their respective provinces be exercisable also by governors of provinces which under this act are to cease to exist, and those powers shall, for purpose of Government of India Act 1935, be deemed to be matters as respects which governors are under this act to exercise their individual judgments. फिर मैं पढ़ देता हूँ दो को. Powers conferred by this section on Governor General shall, in relation to their respective provinces, be exercisable also by governor of provinces which under this act are to cease to exist. And those powers shall, for purpose of this Government of India Act 1935, be deemed to be matters as respects which governors are under act to exercise their individual judgment. पहला तो एक ही जो गवर्नर जनरल की पावर है वो प्रोविंस वालों के जनरल के में यूज कर सकता है, और दूसरा पावर्स जो भी है इस एक्ट के अंदर एक्सरसाइज होगी. This section shall deem to have effect. This section shall be deemed to have had effect as from 3rd day of June. This section shall be deemed to have had effect as from 3rd day of June 1947, and any order of Governor General or any governor made on or after that date as to any matter shall have effect accordingly, and any order made under this section may be made so as to be retrospective to any date not earlier than said 3rd of June. Well, provided that no person shall be deemed to be guilty of an offence by reason of so much of any such order as makes any provision thereof retrospective to any date for making. आगे चलें तो इसके बाद है any order made under this section whether before or after appointed day shall have effect up to appointed day in British India, up to appointed day in British India, on and after appointed day in new dominion of dominion concert outside British India, or as case may be outside new dominion or dominions concerned to such extent whether before or
on or after appointed day as a law or legislature of dominion or dominions concerned would have on or after appointed day, but shall, in case of each of dominions, is subject to same powers of repeal and amendment as law of legislature of the 5. No order shall be made under this section by governors of any province after appointed day or by Governor General after 31st day of March 1948. No order shall be made under this section by Governor General by Governor of any province after appointed day or by Governor General after 31st day of March 1948 or such earlier date as may be determined in case of either dominion by any law of legislature or Senate. किसी भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को अधिकार नहीं होगा कि इसके अंदर ऑर्डर बनाए 15 अगस्त 1947 के बाद, अपॉइंटेड डे के बाद, और गवर्नर जनरल को भी तारीख दी है 31 मार्च तक, तो 1948 तक की, तब तक आप बना सकते हैं इसमें। उसके बाद आपको भी नहीं होगा अधिकार। यह कहने का मतलब सीधा सीधा 31 दिसंबर मार्च 1948 तक उनको अधिकार है, उसके बाद नहीं होगा। आगे क्या कहते हैं? If it appears that a part of province of Assam is on appointed day to become part of new province of East Bengal, preceding provisions of this section shall have effect as if under this act. So it appears that a part of province of Assam is on appointed day to become part of new province of East Bengal and okay. If it appears that a part of province of Assam is on appointed day to become part of new province of East Bengal, preceding provisions of this section shall have effect if it appears that a part of province of Assam is on appointed day to become part of new province of East If it appears that a part of province of Assam is on appointed day to become part of new province of East Bengal, provisions of this section shall have effect. Anyway. अब आते हैं हम 10वें पे, सेक्शन 10 में, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सर्विसेज। 10 पे आते हैं, छोड़िए क्योंकि ये रहेंगे 90 में खत्म भी होंगे। क्या कहता है सेक्शन 10?
Provision of this Act, keeping in force provisions of Government of the Act 1935, shall not continue in force provision of the Act relating to appointments to civil services of. Right. Provisions of this Act, keeping in force provisions of Government of India Act 1935, shall not continue in force the provisions of that Act relating to appointments to civil services of and civil post under Crown in India by Secretary of State or provisions of that Act shall not. So provisions of this Act keeping in force provisions of Government of India Act 35 shall not continue in force provisions of that Act relating to appointments to civil service organization. Yes, let us see once again to review it again and understand that it's a really complicated one, and written long back. All right. So every person who having been appointed by Secretary of State or Secretary of State in Council to a civil service of Crown in India continues on and after that appointed day to serve under government of either of new dominions or of any province or part thereof. Means mandate given to those people who are serving there, they can continue even after appointed day of independence. And then, having been appointed by His Majesty before appointed day to be a judge of federal court,
Okay, then we come to the next one is having been appointed by Majesty before appointed day of judge to federal court or any court which is a high court within meaning of Government of India Act 935 continues on and after appointed day to serve as a judge in either of new domains. So there's a clearance for judges also, no problem. Let judges continue. Shall be entitled to receive from Government of Dominion any and province shall be entitled to receive from Government of Dominion, province and provinces of parts which he is from time to time serving on, as case may be, which are served by courts in which he is from time to time a judge, same conditions of service as respects remuneration, leave and pension, and same rights एज रिस्पेक्ट डिसिप्लिनरी मैटर्स मतलब ये चलता रहेगा उनका आगे कोई रुकावट नहीं है वो चाहे सर्विस कर रहे हो या चाहे जिसमें जो भी हो वो ऐसे ही चलते रहेंगे चलना चाहिए चल छोड़ो अभी नेक्स्ट आइए nothing in this act shall be constituted as enabling rights and liabilities of any person. No, nothing in this act shall be construed as enabling rights and liabilities of any person with respect to family pension funds vested in commissioners under section 2 hundreds of hundreds of 173 of Government of India Act 1905 to be governed otherwise than by orders in council may of nothing in this action shall to be constituted shall act to be constituted nothing in this act shall be constituted as enabling rights and liabilities of any person with respect to family pension funds vested in commissioners under section 273 of Government of India Act 1935 section 273 of Government of India Act 1935 to be governed otherwise than by order of council made by the before or after passing of this act or appointed day by His Majesty in council and rulers by Majesty in council and rules made whether before or after passing of this act or appointed day by a secretary of state or such other minister of crown as may be designated in that behalf by order and council under ministry council order and council under ministers of crown and secretary of now 11. So we have just covered 10 sections, now it's 11. Order to be made by Governor General under preceding provisions of this Act shall make provision for division of Indian Armed Forces of His Majesty between new dominions and for command and governance of those forces until division is completed. Orders to be made 11 orders to be made by Governor General under preceding provisions of this Act shall make provision for division of Indian Armed Forces of His Majesty between new dominions and for command and governance of those forces until division is completed. गवर्नर जनरलों का काम होगा कि जो फौजें हैं भारत की मजिस्ट्री के अंडर हिज मजिस्ट्री के नीचे उनको दोनों देशों में बांटा जाए
जो दोनों नए देश बने हैं उनको इस मिनिस्ट्री के द्वारा जब ही रिश्व आती है, घोषणा आती है, बांटा जाए। हिसाब से जो भी होगा। उसके बाद है as from appointed day 15th August 1947, while any member of His Majesty's forces other than His Majesty's Indian forces is attached to or serving with any of His Majesty's Indian forces, that shall, subject to any provision to contrary made by law of legislature of dominion or dominions concerned or by any order of government, Governor General, under preceding provisions of this Act, have to, in relation to Indian forces in question, powers of command and punishment appropriate to his rank and functions. Nothing in any enactment in force at the date of passing of this Act shall render him subject in any way to law governing Indian forces in question. Nothing in any enactment in force at date of passing of this Act shall render him subject to any way to law governing the Indian forces in question. 12 सेक्शन 12 करीब करीब आधा एक्ट हो चुका है। Nothing in this act affects the jurisdiction or authority of His Majesty's government in United Kingdom or of Admiralty, Army Council or Air Council, or of any other UK authority in relation to any of His Majesty's forces which may on and after appointed day. Nothing in this nothing in this act affects the jurisdiction or authority of His Majesty's government in United Kingdom or of Admiralty, Armed Council or Air Council or of any other United Kingdom authority in relation to any of His Majesty's forces which may on or after appointed day be in either of the dominions or elsewhere in territory which before appointed day were included in India, not being Indian forces. In its application in relation to His Majesty's military forces, in its application in relation to His Majesty's military forces, other than Indian forces, the Army Act shall have effect on or after appointed day. A. If His Majesty's Indian forces were not included in expression the forces. If His Majesty's Indian forces were not included in expressions, the forces, His Majesty's forces and regular forces, and subject to further modifications specified in parts 1 and 2 of third schedule to this Act. Subject to provisions of subsection 2 of this section,
and to any provisions of any law of legislatures of dominion concern all civil authorities in new dominions and subject aforesaid and subject also to provisions of law proceeding section all services authorities in new dominions shall in those dominions and in other territories which were included in India before appointed day perform in relation to Majesty's military forces and not being Indian forces same functions as were before before appointed day performed by them or by authorities corresponding to them, whether by virtue of Army Act or otherwise. Okay, so I'll continue like this. यार क्या करूं? Perform in relation to His Majesty's military forces not being in force the same functions as were before appointed day performed by them or by authorities corresponding to them, whether by virtue of Army Act or otherwise, and matters for which provision is to be made by order of Governor General under proceeding for the ओके, चलिए आगे चलते हैं, ये चलता रहेगा. इसका 4 क्या कहते हैं? Provisions of Section 2 and 3 of this section shall apply in relation to air forces of His Majesty not being Indian Air Forces as they apply in relation to His Majesty's military force, subject however to necessary adaptations and in particular as a if for reference to Army Act there were submitted references to Air Force Act and for references to Part 2 of third schedule to this Act, there were substituted a reference of number 13. ये पढ़ना है ना 13. Yes, you got provisions of subsection 20 of this section shall apply in relation to Air Force of His Majesty not being oh yeah, number 13. With number 13 I'll take 2 minutes.
just go and come back because I have to do some bird service actually. Put some food to birds and be back in 2 minutes. Just now I'll go after this article. 13. In application of Naval Discipline Act to His Majesty's Naval Forces other than Indian Naval Forces, reference to His Majesty Naval Navy and His Majesty's ships shall not, as from appointed day, include references to His Majesty's India Navy or ships thereof. Okay, same continuation. In application of Naval Discipline Act, by virtue of any law made in India before appointed day to Indian naval forces, references to His Majesty's Navy and His Majesty's ships shall, as from appointed day, be deemed to be and to be only references to His Majesty's Indian Navy and ships thereof. In Section 90B of Naval Discipline Act, which in certain cases subjects officers and men of Royal Navy and Royal Marine to law and customs of ships and naval forces of other parts of His Majesty's dominion, words or of India shall be repealed as from any day. Well, and number 14, let me just come back 2 minutes, sorry for that. Just 2 minutes only, I'll be back. Otherwise, I could be there. Sorry for that. Just a minute, please. Hold on. I'll be back. Oh, sorry, I'll be back. I'll be back. I'll be back now. Yeah. It's very cold actually. Very cold outside. Very cold breeze. Very cold breeze in the wing. Sorry, gentlemen. It was a little out. So 14.
A Secretary of State or such as a Minister of Crown as may be designated in their behalf by order in council under ministry council. A Secretary of State or such as a Ministers of Crown as may be designated in their behalf by order in council under Ministers of Crown Transfer of Functions Act 1946 is hereby authorized to continue for time being performance on behalf of whatever government or governments may be concerned or functions as so as to making of payments and other matters similar to functions which up to appointed day Secretary of State was performing on behalf of governments constituted or continued under Government of India Act 1935. All these are different issues, provisions to the Secretary of State and auditors of in how and then the functions of this and the next article is regarding this is 15 legal proceedings by against Secretary of State, then there are many others like that. And 16 is add-on, which is regarding section of 280 Government Act, which confers the domestic power to make order in council. 16 is 16 add-on, which says that section of 288 of Government of India Act 1935, which confers on Majesty His Majesty power to make an order by order in council. Provisions for Government of add-on shall cease to have effect and this terminates at 1987. Well, then there's another one. So I'll take the remaining one later on because still there are 7-8 pages of this act. We'll take the next one. Uh, we'll take the other one, next one, because cannot digest in one go. What I'm saying is, I just try to bring to you people what actually happened during 1947 year of our independence, appointed day, 15th August for both nations, Bharat and Pakistan. They were partitioned based on territories, not on religions. Maybe they discussed something about religions, but as I said, this partition was result of religion dispute. That is not acceptable. These were territories, territorial issues were there. Maybe they consider something in films or somewhere else, but Act doesn't define anything as such. Accept agreement. I can see video also, which no need to explain here. You can yourself see. And what my purpose was to bring to attention of all those people who have very small level understanding about our freedom, law, though they know after freedom what happened after those, but freedom which we got through this act means we lost one area from India, British India, but we got two areas and with various arrangements that was mandated by this act. British government surrendered its responsibilities, withdrew its powers and everything on 15th August 1947, effective day when we ourselves got power unto us with help of Governor General appointed by under this act. From there on, we moved our journey and Constituent Assembly was formed in place of Parliament, which was meant to design our Constitution. And those who are saying that this partition was because of religious-based division, that is entirely not acceptable and rejected. Act does not mandate that. Whatever happened, it might happen on other groupism, not because of, can say, country style. It is people say that country, Pakistan and Bharat were divided based on Hindu and Muslim religion.
which is incorrect. Portion of Punjab that went to Pakistan and most of Bengal that came to this point, ourselves. These are geographical considerations, and Pakistan became one state, one nation, one dominion, and we, Bharat, became another dominion. They accepted later on how they wanted to move, that was their problem. But we accepted how we wanted to move was our problem. What they did, it was not necessary, we had to do. And what we did, it was not necessary for them what to do. It was their choice, it was our choice. So you cannot say, no one can say that our nation, India, was an objective to be a Hindu nation as Pakistan accepted Muslim nation itself. We did not accept that criteria, but we resorted to all people's state. All people's state means people belonging to whatever sect, whatever religion, whatever caste, whatever culture, whatever and whatever that has been there for centuries and millenniums long would stay in this country, India, dominion named Bharat. This was our decision, collective decision of whole public, not decision by one community. This poison injected into our minds, dissolved into your minds by certain anti-national, anti-social elements, groups of people having that type of understanding are actually not our supporters but our destroyers. Those people who never respected humanity, who never respected sects, just had their own ambitions to rule this country, could never succeed till 2014. Those people tried their best, but always were rejected. This is fact of this country. This country was never Hindu country or Muslim country or Christian country or Sikh country. This was a country for people of this country, for citizens of this country. This was not for any particular country, community, and those who wanted that always worked against this country. I don't want to go back to that time. No use, my purpose is different. I just want to clarify what I came to know from these documents. Therefore, particular information should be shared with youth of today. Youth, those who have blood, burning blood, active minds, very active potential and dynamic energies, kinetic energies within them. They should understand who we are, where we are. We never had been any religious nation. We had all been public nation, public of whatever sort we had. On 15th August 1947, those public and also those who opted to leave this public, leave this nation, they left. And those who opted to come from Pakistan came. Migration, reciprocal migration affected. In 1947, people came from Pakistan, people from India went to Pakistan. Who came and who went, that was their outlook. Those who were loyal to our country, Bharat, India, they are Indians, they are Bharatvasis. Those who did not like to be loyal to this country, they left to Pakistan, or who were there in Pakistan area that time in 1947, they did not leave their place and come to this country.
They were loyal to Pakistan, not to Bharat. Question is loyalty because they were two countries in place of one. They prefer to stay in that country and we prefer to stay in this country. That is simple answer. Whatever religion you had, that is nothing to do. Those who had bad concept in their mind, those people who have been living for centuries and millenniums in Pakistan area, that time which was India, or also those who were here, which India is living here, they thought in themselves or they were misled by some people that Pakistan was going to be Muslim country and Bharat was going to be Hindu country. That could be, you can say, a lie, a poison spread among those minds. And they thought, probably, they thought in those days, Bharat is going to be a Hindu nation. This might have been spread to them. That's why they migrated from Pakistan and joined India. And people from here thought that's going to be Muslim country and they left there. That was their outlook. This means they were confused society. They were more interested in religion rather than society as a whole, rather than nation as a whole. This was their thinking, not national thinking. Yes, Pakistan got separate because of religion. That is problem of Pakistan. That's not our problem. We did not force them to go. There was no decision during independence struggle, act per act, as per this act, that because of Muslim, Pakistan was separated. Now, this is not given anywhere. It is geographical division. Whatever leaders agreed, nothing to do with that. Parliament said, no, this is your, this portion is that. And it's up to you to decide to choose which way you want to go. Some states had referendum, which was mandatory. You decide where you want to go. So you decide it. You cannot say, no, this must be complete one religion and this must be another religion. That doesn't mean anything. It was misconcept. People were not very well informed, I think. They didn't know what is written on Act, what was agreed. Maybe communication was not very smart in those days. What I told you, he told someone, he passes on someone else, that person for someone else. It might have happened. And misinformation worked. A kind of fake news worked, you can say, in those days. There was no internet, nothing but verbal fake news worked. Hearsay worked. And they thought this is Hindu nation and that is Muslim nation. Hindus left Pakistan and came to this country, and some part of Muslims went to Pakistan. This is their choice. So why to think on that mistake or no mistake now? My question is, a person who has a loyalty for 72 years in Pakistan, irrespective to which religion that person belongs, I don't take into my consideration religion for nationality. If that person has been loyal to Pakistan for more than 70 years, how can we expect that that person will be loyal to this country now? And vice versa also applies. One has been loyal for Bharat for 72 years. How can you expect to go to Pakistan loyal there? We have to consider humanity interest. If somebody is Hindu or Muslim, for me, that person is person. You assume in the religion. Today I say I am this. I'm not Hindu. I'm not atheist. I am this. I want to convert to Christianity. How shall it affect my mind? Yes, it's my faith. I respect Hindu. I respect you. Have to respect everybody. But you say no. I don't trust in this. I want to adopt Islam. Okay, adopt Islam. Who is stopping you? But it doesn't make an impact on nation. Those nations which respect religion, they never can move further. Never. Yes, language is one thing, culture is another thing. You may do that. But generating frictions based on religion is a bullet shot, is a bomb shot. Are you living for religion? My question to everybody in this world is, are we living for religion or are we living to live? Are we living for getting something, to do something for this earth? Or we are living
for religion which no one can prove. No one can prove God is there. Yes, there is faith. What type of God is there? What form of God is there? There is a mark or no mark? You cannot find anything. Something imaginary, something hypothetical. We believe, but we don't believe this practical, this physical entity of human being. Everybody says God is there. Yes, God is there. We know. Even those who don't believe in God, they know. God is there because nature is there. God is there because my body is there. I'm living. I am not controlling my body. I cannot control your body. You cannot control your body. This means there is something behind that generates you and then kills you, that expires you. When you expire, you say, it's not in our hands. So when death and life is not in your hand, even health is not in your hand, mind is in your control, work is in your control, that also based on energy, and how can you say that someone else is not controlling you, and that someone else who is controlling you is God, is force of nature, is power that is understood by everybody. But they shall not accept that because minds are bound to some confined rope, and that rope is religion. No, Sanatan, Arya, Hindu, they designed everything. Islam, Christianity, all. They designed everything. Okay, accept, no problem. But are you human? Are you human? Good human? That's the point. If a human is ready to kill another human, I don't think that person can be called God-fearing person. You are a product of God, and that person whom you are killing is also a product of God. One product kills another product. This is really, you can say, not acceptable. God shall not be pleased because you both are brothers or siblings, like both are God's product. And if you're ready to kill someone else, you think God will be happy. It's your choice to think. I can stop that. But fact remains fact. Purpose of this deliberation is to tell whole world, and particularly our population in country of Bharat, that it's better to avoid such type of disputes regarding communities. Don't forget, you have no right on natural resources. Everybody has right. You have no exclusive right. You are saying this is my country, Hindu country. You have nothing in your mind actually. You are in delusion. You are in delusion. You are in a world where imagination works, might works. You are showing your might to world. This is my religion nation. My question to everybody is very simple question. Whatever God you trust, whatever God you believe, in all religions, what do you think? God gods claim this religion? Example is Trinity, say Shiva, Vishnu, Brahma, Kalika, or others, or others, or others. Did some one of them ever name that Shiva belonged to Hindu, or Vishnu belonged to Hindu, or Brahma belonged to Hindu, or Kali belonged to Hindu? Have you ever heard speaking them as such? Which holy book mandates this? And not only this, I'm talking about all. God, God, no religion. God, God, no title of religion. God is God. God is Ishwar. God is Allah and all whom you believe. Atheists also say they don't believe, but in fact they are also God-fearing. Fighting is very easy. Political game is very easy. Don't think the lives of people are affected. When partition was affected,
Millions of people were transmoved from here to there and there to here. Of course, they must have lost their whole life earnings. They must have lost so many additional, they must have grievances about that. Why do you want to create grievances again? Government is there to be in power, not to work for service of people. Governments are all like that. Government people just want to be full whole public. And this is not only in this country, in every country. They just want to be full people, real people, because all are in democratic world. Unfortunately, democracy has plus points and minus points too, merits and demerits. Democracy is opinion of people in collective form, but also it is opinion of, because majority of people are not very brilliant. They are based on faithful consideration. They are swayed too early, emotionalized, and you see, if you take decision based on emotionalization, sentimentalization, thoughts, beliefs only, you cannot rationalize your decision. And you will of course lead to decision is emotional based, and you may call that leader charismatic who emotionalizes you. And second name of emotionalization to my consideration is sentimentalization, emotionalization, swaying is nothing but befooling people. Democracy is a perfect example where people can be befooled. Democracy is a perfect example where people cannot come to power. In fact, only very few people come to power, because you cannot lead all together. Everybody has to live, take food, and to earn, and all his time is spent on this. Where people who have wealth, who have money, who have resources, they can spend money and come to power, or they can support someone come to power. So you cannot say democracy is perfect world of politics. It's, you can say, a sewage work where corruption moves everywhere, and we don't care about that. We are all interested to submit ourselves to these politicians, which is a real root of evil. Politicians mean to serve people, but they are not serving people. They are just serving themselves to take your votes, and it's all over here. If they do service, they are like God. They are called representatives, people as representatives. But people don't understand what does representative mean. You have to find new definition of representative. We don't know what is representation. At least I cannot understand. I'm 65 years old. I have seen many elections. I have failed to understand what does representation mean. If government means only to play its games over people, I cannot call that person a government or that minister a government one. You can answer anyways, I know. All politicians can answer your questions just to keep you shut. They never accept their mistakes. First quality of a politician is political leader never accepts mistake. They always throw mistakes on others. Work they are doing, in power they are, failure is theirs, but they never accept anything. That is called politician. If he accepts mistakes, if one person in politics and tries to see better, do better, that person can never be called a politician. That person is called a leader. Leader means mistake. Understand? It's not dictionary meaning, it's a practical meaning. If you don't make mistakes, you can never become a leader. Fact remains fact. Leader means a person who is ready to make acceptance, to accept mistakes and learn from them. A leader must be a learner from mistakes, not from books. Everybody has to decide, and making decisions sometimes make mistakes also. A leader is that person who can analyze problem of society,
who can read society, who can innovate what is happening in society, who can mix up with society, who can move in society, not move under top class bodyguards. That is called leader. Here we don't have any leader. We have high profile, guarded persons leading our country, guarded persons, top class guarded persons. Most of them are guarded. Very few people, I don't think even one or two will find guards free. And they are leaders. People call them leaders. Some call them gods. Unfortunately, our minds have been tied up. Our minds have been enslaved by these leaders. We have been enslaved. We are enslaved society. And we are too pleased to be enslaved by these leaders who are nothing but cheaters, frauds. It's not here everywhere. This is general principle, means some disease comes to one society, this internet brings that disease to everywhere, and news dissemination gets that disease to all over the world. And that is only a reason that people had not been interested in entering political sector, because only families are coming in politics, all families are coming, no professionals are coming. There is no dearth of professionals in this country. There is no dearth of professionalism. There is no dearth of intellectualism. There is no dearth of good people. There is no dearth of hardworking people. But here no hard work is required. No good people are required. Only required is talk, speech, answers. That's it. You have to be ready with the answer. So you are a successful politician. You are a charismatic leader. If you can answer a question, do nothing. How many times you can lie is a measurement of your being a top leader. If you lie every day in every speech, you are best leader. If you go to jail and come back after release, you are garlanded. That's called leadership. If you always pass your responsibility from someone else's shoulders, you are best leader. If you cheat public, you are best leader. If you say it is, I just promised you will give this one, but I know I cannot give it, but that's also, you can say, fooling leader, be fooling leader. A leader talks a lot and does nothing. This is 2019 leader. 2019 leader. And people are outside also, walking here and there. They are not leaders, but they are just walking for sake of walking. It's really amazing to know that we are living in such a society where people, in fact, are used to sleeping style. Generally, I think about this after having got freedom, so many sacrifices and delay, we have never been serious. We have never learned lessons from those societies other than our society that are moving around us. We are biggest people, one particular people. We must understand something. We must know our problems. We are a struggling nation, yet we are not learned. Yesterday I was watching some program and news also about the Citizenship Amendment Act, and I was surprised that our leaders can talk a lot and whatever they want to talk, and our reporters don't want to analyze anything while asking questions as if they lock their mind with lost key. Question was something, and answer was very extraordinary. A minister says, this act is for giving citizenship, not for taking citizenship. Well, this stirred my mind. It stirred my mind. I don't know whether you are stirred or not stirred. Act is for giving citizenship and not for taking citizenship. My question to all citizens of this country is, or not only to this country, all countries,
Which act exists or does exist that takes citizenship? Can someone tell me which act mandates to take back citizenship and what grounds? What are grounds for that? Can someone tell me? You can impound passport. Indeed, you can impound passport. You can stop person from travel. You can put a person behind bars. You can do that. But can citizenship be taken back? It's a burning question. Minister is answering and reporter is accepting. No cross question. Why? Citizenship can be surrendered, of course. I can surrender my passport. Travel is surrendered. I can go to another country, become a citizen of that country. This means I surrender here. But my citizenship cannot be pulled back because citizenship was not given to me. I am a natural born person here. How can you take back my citizenship? And even if I am naturalized citizenship, you cannot take it back on that basis. You can put me behind bars because of my crime. Even those who are in jail, they are citizens of this country. And those who are not jail or not from our country, they are foreigners, they are citizens of that country. How can you say citizenship can be taken out, can be taken back? Means all laughing stocks are laughing stocks. They are asking, prove your citizenship. Yes, you ask me, prove my citizenship. What's your question? I can't understand. I am unable to understand this question. Prove your citizenship. This is a false question designed by a full person, and that law which mandates this is a full law. And the government that does it is false government. How? What do you mean by prove your citizenship? What do you mean by that? There is a set law in our constitution regarding citizenship. You cannot override that law. There's something structured in our constitution. You're not allowed to override that. Even judges cannot do that. No. Citizenship is naturalized or not natural. No other way. Once you have issued documents, for example, passport is used for travel purpose, but to whom it is given? Do you know that? Have you ever filled passport form? What does it state? Does it state you're not citizen? Go and read passport application form and passport instrument itself, passport document itself. Go to both pages, first and last, and read what it says. This is a document issued to citizen of this country, not to American citizen, not to England citizen. This is used to a person who is citizen of this country. That's it. It's clearly written on last page of our passport that citizen of, when you are abroad, a citizen, you have to register, or you better register with your embassy there or whatever is there, post there. What does that mean? You are a citizen or not? And what address is given on first page by president of this country, that this is a person, our citizen,
This bearer should not be barred from entering and be allowed, be privileged to provide all requirements, support during some emergency if dealt with, if met with. This is standard language. Which citizenship rights you are demanding now? Which proof you are demanding now? I don't understand. You are saying this is a travel document. Yes, it is a travel document. It is a document for that purpose. But it is given to whom? Can you give it to Pakistan? Can you give to American? Can you give to Saudi Arab person? Can you give passport to them? You cannot give to them. They have to be citizen. Then why do you asking through your citizenship? You are saying voter card is not citizen document. What is that then? What for you make it? You say it is identification. Yes, it is identification. Passport is also identification. Identification means citizenry plus and plus and plus. All make some documents. Passport says this citizen is traveling. Voter card says this citizen is voting. Yes, Aadhaar card can be different meaning. Because Aadhaar card is linked to residential Aadhaar. It's not birth Aadhaar. But passport and voter card are related to citizenship. You cannot issue voter card to American person, and you cannot issue books as such I told or other things, items without any verification. What police verifies for passport is crime record. But you allegiance, you are taking this. What are you saying? I have allegiance to constitution of this country. Who shall adjust the constitution of this country? Is citizen. Means as much as we are getting high up in education, we are only learning and nothing else we are doing. We are not understanding. We are cramming. We just speak without thinking. We have no capacity to speak. We speak whatever you want to say. Whatever government does, people think right. You abrogate 370. You abrogate Jammu Kashmir Constitution. You abrogate article of instrument of taxation. You do whatever you want. People are having so much trust in government. They say, oh, yes, the government is done right. Because people are not thinking anything. They are not thinking anything. That's why I usually say we are a sleeping society, and that is a relation. We are a sleeping society. Okay, we are a sleeping society. I agree this with old like me. I agree this with our veteran people. I agree with super seniors. No mind for that. I don't mind. They have passed their life. They have done what they want to do. But other people, youth of this country, student of this country, thinkers of this country, professionals of this country, business people of this country, and many more, who think that they are responsible to society, who think that they have potential to make this country better. If those people stop thinking, if those people stop everything which they are supposed to do, whom should I blame? If as a citizen, as a student, as a scholar, as engineer, doctor, professor, other professional, if you cannot think, only we work in our profession and just trying to make money and career. That's it. You don't have any responsibility towards your nation. You don't have responsibility to the public.
Everybody has a responsibility towards society. That's a part of ethics of every profession. You cannot skip that. If you skip that, that will skip you, remember. Everybody is responsible towards nation in all respects. If you think I have to take nothing from this nation, don't take. Give. Nation needs your time. Nation needs your knowledge. Nation needs your command. Nation needs everything from everyone. Do not talk nonsense, talk sense. Those were not mads who provided a constitution to us. You think they were mads? Only your books, technical books, science books, commerce books, you have to read them only. You're not supposed to know what book which you base on which you got your country in. What is that? Don't you think that way? Your time to waste, your time to invest where you want, but you have no time to talk of constitution. Thanks to those guys who are in struggle, who are demonstrating, at least they are learning constitution. Even by force they are learning, but they are learning. At least some are learning. But generally no, only opposition or support. No, I say never oppose, never support. First thing, government is a player. Government is not genuine. No government is genuine. Everybody wants to strike others just to stay in power. No one has got any solid program, solid scheme for future. All are just watching for sake of watching, living for sake of living. All are doing that. This is unfortunate. We have to control ourselves. आज हम नहीं सोचेंगे तो कब सोचेंगे? हम आजाद हो गए, अच्छी बात है। जब चले गए आजादी कराने वाले, हमारे स्वतंत्र दिलाने वाले, हम छोटे थे, समय नहीं जाता था, कुछ नहीं समझते थे। अब तो छोटे नहीं रहे, पढ़ लिख गए। हम देश के बारे में सोचना नहीं चाहते। हम कहते हैं जो कर रही है सरकार करती रहेगी, सरकार है तो करती रहेगी, जो करना है उनको। कोई भी सरकार पहले अपने लिए सोचती है, बाद में सोचती है जनता के लिए। पहले सरकार जो आ जाती है वो सोचती है मैं किसी तरह से हटाई ना जा सकूं, वो सोचती है कि मैं हमेशा के लिए इस पे आ गई। जिंदगी का पता नहीं, अगले पल का पता नहीं, वो लंबे लंबे सपने दिखा देती है। 50 साल में हम तुम्हें ये दे देंगे, हम तुम्हें मकान दे देंगे, हम तुम्हें ये दे देंगे, हम तुम्हें वो, हम सब प्रॉब्लमों का हल निकाल देंगे, क्योंकि हम ही भगवान हैं। और जब हल निकालने की बात पूछोगे, पूछते क्यों हमसे? हम पे विश्वास नहीं है, हम एंटी नेशनल है। आप हमारे, आप देश के विरुद्ध बात करते हैं, आप हमारे विरुद्ध बात करते हैं। जब सरकारें ऐसी बनने लग जाएं तो समझ लीजिए देश का बेड़ा गर्क होना तय है। धर्म के नाम पे देश नहीं चल सकता, समाज नहीं चल सकता। जहां हजारों साल की हिस्ट्री रही हो एक दूसरे के साथ मिलकर रहने की, हमें क्या फर्क पड़ता है? कोई मुसलमान मानता है, कोई हिंदू मानता है अपने आप को, कोई सिख मानता है, ईसाई मानता है, मेरे से क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है बताइए? आप फौज को देश की मान सकते, आप फौजी के समान को देश का मान सकते हैं, आप सब चीजें देश से मांग सकते हैं, बस एक आपको धर्म अलग चाहिए। मैं हिंदू हूं, ये मुसलमान है, ये ईसाई है, ये सिख है, ये वो है, ये है, वो आप मान सकते हैं। आप मानव को मानव नहीं मान सकते। अरे अगर कोई गलती करके गया तो हम क्या करें? अगर कुछ लोग पाकिस्तान बनवा के गए तो हम क्या करें? हर व्यक्ति की अपनी सोच है, कोई रहा नहीं परमानेंट यहां ना रहेगा, कुछ समय के लिए सोच होती है। कितनी बार बना दो आप देश को अपने हिसाब से, चलता नहीं है कभी। देश फ्री माइंड से चलता है। क्यों लड़ना चाहते हैं आप बिना बात पे? पुलिस ने ये कर दिया, पुलिस ने वो कर दिया, आदमी ने ये कर दिया, कर दिया, इन्हीं बात पे जिंदगी बिता देना। सवाल नहीं पूछना समाज से, बिल्कुल सवाल नहीं पूछना।
करते रहो धर्मों की लड़ाई, क्या होने वाला है, क्या नतीजा आएगा उसका। तू पाकिस्तान चला जा, तू यहाँ ना रहे, वो वहां चला जा। अरे जो गया अपनी इच्छा से गया, जो वहां से आया अपनी इच्छा से आया। 47 में सबको कहा गया था जिसको जिधर जाना है जाओ, आपकी मर्जी है। जब 47 में कहा गया था तो सोच रहे थे क्या? यहाँ से जाने वाले भी गए और वहां से माने भी आए। जिसको यहाँ अच्छा लगता यहाँ आ गया, उसको वहां अच्छा लगता वहां चला गया। किस बात की लड़ाई है? अरे जहां रहोगे प्रॉब्लम तो होंगी। यहाँ कौन से सोने के बादल पड़े हैं, सोने के भंडार पड़े कि आप उठा लेंगे सड़क पे आके? यहाँ भी वही प्रॉब्लम है जो वहां है। कहाँ नहीं प्रॉब्लम? सब जगह प्रॉब्लम होती है। आपके मन के ऊपर था कि हमें तो नहीं चाहिए, वहां जाना है जाओ, वहां से जो आना था आ गए। अब किस बात का झगड़ा कर रहे हो? ये झगड़े या कभी खत्म हो सकते हैं? एक तो होता है लड़ाई दुश्मन से करना, दुश्मन से करके तो पता होता है कि वो दुश्मन होशियार हुआ जा सकता है, लेकिन अपने घर वालों से लड़ना बहुत मुश्किल होता है। बिना बात की लड़ाई मानी जाती है। जब आपके पास देखो, जो आदमी काम करने वाला होता है, हल निकालने वाला होता है, सोचने वाला होता है, उसके पास इतना समय नहीं होता कि दूसरों की बुराई करे, वो ऐसा नहीं कर रहा, वो ऐसा नहीं कर रहा। उसके पास इन चीज़ों का समय नहीं होता है। उसको हम स्कॉलर कहते हैं, प्रोफेशनल कहते हैं, काम के बारे में ध्यान करता है। और जिसने काम नहीं करना, यार काम मेरा हुआ नहीं, मैं कैसे बेवकूफ़ बनाऊंगा, इसको ये कह देना यार, ऐसा पूछे तो वो कह देना, ये क्वेश्चन है तो वो कह देना। कितनी अच्छी बात है, आपके पास काम करने का जवाब नहीं है और आप कह रहे हैं ये गलत है, वो गलत है, मैं सही हूं। हमने कोई गलती नहीं की जिंदगी में, ये गलत है। इन्होंने सारी जिंदगी का खराब काम कर दिया, अब जो ये खराब काम कर रहे हैं हमसे ठीक कर रहे हैं। ऐसे जो आदमी होते हैं, मेरे हिसाब से वो झूठ होते हैं, झूठ सच से बहुत दूर होते हैं, और वो चाहते नहीं कि कोई उनकी बुराई करे, इसलिए पहले दूसरे की बुराई करते रहो और किसी को अवसर नहीं दो कि आपसे कोई प्रश्न कर सके। ऐसे लोग सिर्फ चिल्लाना, दूसरों की बुराई करना जानते हैं और ऐसी ऐसी बातें उठाते रहते हैं जिससे शांति ना रहे। एक गलती नहीं, दो गलती नहीं, जब वो गलती ही करते जाते हैं, जो गलती ही करते जाता है, तो आप जान सकते हैं वो कितना बड़ा पढ़ा लिखा होगा। मेरा मतलब ये बताने का था कि जो आज हो रहा है हमारे देश में, वो कोई जरूरी नहीं था होना। आज देश में क्या प्रॉब्लम है हमको सबको पता है। रोजगार नहीं, नौकरियां नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, शिक्षा का स्तर गिर रहा है, खेती का स्तर गिर रहा है, किसान परेशान है, हर जगह हेरा फेरी है, क्वालिटी नाम की चीज नहीं है, सेफ्टी नाम की चीज नहीं है, और हम कुछ नहीं कर पा रहे। हम इसलिए नहीं कुछ कर पा रहे कि हमारे पास कोई सोच नहीं है, कोई तरीका नहीं है। बातें तो हम करते हैं विश्व गुरु बनने की, और गुरु है ही नहीं, हम कॉलेजों में गुरु नहीं है। गुरु कैसे कहते हैं हमें मालूम नहीं है, हम जानते नहीं गुरु कौन होता है। हम अपने बच्चों को पढ़ने नहीं देना चाहते, हम उनको सुविधाएं नहीं देना चाहते, जबकि जिम्मेदारी हमारी भारत के लोगों की है। जो बच्चा पढ़ना चाहता है उसको पढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पढ़े वही जाते हैं जिनकी जेब में नोट होते हैं, जो अपने आप को साबित कर सकते हैं, देखिए हम कितने पढ़े हैं। ज्यादा बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। सारी दुनिया में प्रॉब्लम चल रही है, कहाँ रोकोगे आप? सब जगह है प्रॉब्लम, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहीं चले जाइए आप। अमेरिका में जाइए तो वहाँ प्रॉब्लम है, 36 तरह के एमिग्रेट्स आ रहे हैं, वो नहीं रोक पा रहे हैं, और बहुत सी प्रॉब्लम है। उनकी दूसरों से लड़ाई, इकोनॉमिक वार चल रही है, वहाँ भी प्रॉब्लम है। चाइना में भी प्रॉब्लम है, जाके देख लीजिए, यूरोप जाके देख लीजिए, वहाँ भी प्रॉब्लम है। कोई जगह चले जाइए, सब जगह प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम सब जगह है, चलती जा रही है, लंबी होती जा रही है, सॉल्यूशन नहीं निकल रहा। कभी लगता है सॉल्यूशन कहीं निकल रहा है तो फिर लड़ाई हो जाती है। यमन देख लो, सीरिया देख लो,
और जहाँ भी हो रहा है वहाँ देख लो। अब चाइना भी शुरू हो गया है, हो सकता है कल को यहाँ भी कोई आ जाए पूछने, भाई क्या करें फिर। मैं जो ये बात कर रहा था, जो मैंने आज आपको समझाया है कि हम जब आज़ाद हुए थे, किस नियम में हुए थे, उसका एक मतलब था सिर्फ ये बताना कि आप एक ही बात को सच मत मान लो, डॉक्यूमेंट्स को पढ़िए पहले। जब तक आप डॉक्यूमेंट्स को नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, आपको सच्चाई समझ नहीं आएगी। गुमराह तो आप जल्दी से हो जाते हैं क्योंकि आपका माइंड गुमराह होने वाला ही बना है। आप जब तक नहीं पढ़ेंगे, जैसे संविधान को आप नहीं पढ़ेंगे, आपको वास्तविकता पता नहीं लगेगी। संविधान को पढ़ने में पता नहीं लोगों को क्या तकलीफ है, मुझे समझ नहीं आता। संविधान नहीं पढ़ना, अपने मतलब की चीजें नहीं पढ़ना और फिर गालियां देते रहना दूसरों को या क्रिटिसाइज करते रहना। अब वो कौन क्रिटिसाइज करता है, क्या करता है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। हर एक पार्टी के अपने अपने लक्ष्य हैं। कोई कुछ करना चाहता है, कोई कुछ करना चाहता है, कोई बुराई करके जीतना चाहता है, कोई काम करके जीतना चाहता है। सबके धंधे हैं, गोरख धंधे कह लो, कुछ भी कह लो, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। गाने आते रहते थे पहले, वो गोलमाल ही दिखता है मुझे आज तक तो। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, राजनीति की चाल है। करोड़ों रुपए खर्च के जो राजनीति में आता है, वो क्या सेवा करेगा, एक सोचने की बात होती है। किसी भी पार्टी का क्यों ना हो, मैं किसी पार्टी का एजेंट नहीं हूं यहाँ पे। जो व्यक्ति करोड़ों रुपए खर्च के एमएलए बनेगा, एमपी बनेगा, मैं तो उससे आशा रखता नहीं। आप रखते हैं तो रखें। और यही कारण है कि आज हमारी लोकसभा किन लोगों से भरी हुई है, हम सब अच्छी तरह जानते हैं। और हम ही ने तो उनको चुन के भेजा है। मतलब ये कि हम इतना भी नहीं सोच सकते कि हम जिनको चुन के भेज रहे हो उनके अंदर क्या गुण होने चाहिए, ये बात भी हम नहीं समझ सके अभी तक। शायद 13 इलेक्शन 14 इलेक्शन हो चुके जब से देश आजाद हुआ है। 14-15 इलेक्शन में हमको ये बात नहीं समझ आई कि एक आदमी कितना पैसा खर्चता है और ये इलेक्शन कमीशन में क्या दिखाता है उसको छोड़िए। क्या सोचा जाता है हम लोगों के बारे में। अरे इतना पैसा खर्चते हैं, बहुत बड़ी कंट्री है भाई, बहुत बड़ी कंट्री, सही बात है, बहुत बड़ी कंट्री है, हम क्या करें। मैं तो सिर्फ आपको यही कहना चाहूंगा कि अपनी नींद लीजिए, लेकिन थोड़ी कम लीजिए, काम कीजिए, उसको लगाइए और सरसों का तेल लीजिए, हाथ पे जमाइए। जमा सकते हैं क्या। खैर, अगर आपको मेरी बात को अच्छा नहीं लगता है तो कोई बात नहीं है, आपको समय सिखा देगा। लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँगा, खास तौर से उन स्टूडेंट्स से, उन यूथ से, जॉब करने वाले लोगों से, जॉब जो ढूंढने उन लोगों से सीरियस थोड़ा हो जाओ। देखिए, अगर आपको सरकार लगता है बहुत अच्छी लगती है तो बेशक सपोर्ट कीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये सरकार के अंदर वो क्षमता नहीं है जो आपको आगे ले जा सके, आपको आगे का रास्ता दिखा सके, देश के अंदर बेरोजगारी को कम कर सके या खत्म कर सके, शिक्षा को स्तर को उठा सके, अगर आपको लगता है इस सरकार में, इन लोगों में वो क्षमता नहीं है, तो आपको सोचना तो होगा, सोचना होगा। कब तक आप ऐसे लोगों को राजनीति में रखेंगे जो कुछ नहीं कर पा रहे देश के लिए, बातें करने के अलावा। कोई भी हो उसमें, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा। आपकी समस्या वो लोग नहीं सॉल्व कर सकते जिनको समस्या का पता ही नहीं, वो सॉल्व नहीं कर सकते। आपकी समस्या वही सॉल्व करेगा, पहले तो इस समस्या को समझेगा, सीरियस होगा, अगर उसकी समस्या है भी तो उस पर काम करना शुरू कर देगा। यह होना चाहिए। आपको अपने आप आइडेंटिफाई करना होगा कि आप किसको आगे लाना चाहते हैं, किसको अपना प्रतिनिधि बना के भेजना चाहते हैं,
ये फैसला आपने करना है। ये फैसला किसी रिवाड़ी के ने नहीं करना है, आपने फैसला करना है। अभी आपके ऊपर है, आप फैसला क्या सोच के करते हैं, कैसे करते हैं। लंबा सफर होता है देश का, हमारा भी चल रहा है। गलत फहमी फैलाई जा रही है, गवर्नमेंट के द्वारा ही फैलाई जा रही है, कोई और तो छोड़ दो। आप सरकारी गलत फहमी फैलाए तो क्या करोगे? अगर प्रधानमंत्री लेवल का आदमी झूठ बोले तो आप क्या करोगे? गृह मंत्री लेवल का झूठ बोले आप क्या करोगे? सब झूठे। प्रधानमंत्री झूठा, गृह मंत्री झूठा, और बेचारा राष्ट्रपति को तो काम साइन करने का है, उसको तो कोई पूछता नहीं है। और रही हमारे जजों की बात, तो आज की तारीख में डरे हुए हैं सब। सच तो यही है, वो कुछ भी बोले, कुछ भी फैसले करें, वो फैसले सरकार के खिलाफ नहीं कर रहे, क्योंकि असली काम है। जिस देश में सरकार के खिलाफ फैसले होते हैं वही देश आगे निकलता है। यहाँ तो सरकार के साथ बैठे हैं जज बैठे हैं, इस 4-5 साल में तो हटे नहीं रहे वहां से। उन्हें पता है भाई हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, इसलिए चुप रहो, ऐसे फैसले करो मत। जब फैसले नहीं होते सही सरकार के द्वारा, जजों के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, तो फिर जानते हो क्रांति आती है। हरित क्रांति नहीं, कलित क्रांति आती है। ऐसी क्रांति आती है जो बड़े से बड़े पहाड़ों को गिरा देती है, बड़े से बड़ी संस्थाओं को गिरा देती है। ऐसी क्रांति आती है। प्रारित्रनाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, वो क्रांति आती है। इसमें वंश के वंश मिटा दिए जाते हैं, कौरवों को मिटा दिया जाता है, पांडवों को भी एक तरह से मिटा दिया जाता है। ऐसी क्रांति फिर वही आएगी, भूल जाएंगे लोग कौन सी सरकार कहाँ थी, एक बुलबुला था पानी का चला गया। ऐसी क्रांति चाहते हैं आप, या ऐसी क्रांति चाहते हैं जो समझदार लोगों को लाएं और देश को बढ़ाएं? इन जानवरों से जो इंसान को इंसान नहीं समझते, झगड़े करा देते हैं अपने आदमी बीच में डाल के, शांतिपूर्वक प्रदर्शन हो रहा है, आप भी 2 गुंडे भेज दो बीच में और आग लगा दो, और फिर कहो जी देखो ये सारे बदमाश हैं। अरे जहां 5,000 10,000 बच्चे पढ़ने वाले प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या उनके हाथ में बंदूकें हैं, बॉम्ब है उनके हाथ में, तलवारें हैं उनके हाथ में, क्या है उनके हाथ में? आप कह रहे हैं जी ये नुकसान कर रहे हैं, वो नुकसान करने के लिए शोर मचाने आए हैं, नुकसान करने के लिए प्रदर्शन करने आए हैं। कैसी बातें करते हैं आप, वास्तविकता से बहुत दूर। और आपके ये चमचे पतीले टीवी चैनल, इनको तो कुछ काम है नहीं। आपके चमचे आपके पैर की जूते की जो पॉलिश करने के अलावा, इस सारे चैनल खरीदे हुए चैनल। शर्म आती है देख के आपकी कारकर्दगी को। आप देश के लिए ना होके किस बस एक ही काम है आपको, दूसरे को बुरा कहते रहो। अरे कांग्रेस खराब थी, भाड़ में गई कांग्रेस, अपनी बात करो आप। कांग्रेस को कौन पीछे पड़ रहा है यहाँ? लेकिन हाँ याद रख लेना, बाई डिफॉल्ट ही कोई जीतता है हारने वाला। अगर आप इतनी बुराई करते जाएंगे, कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस करा रही है, कांग्रेस करा रही है, अगर कांग्रेस करा रही है तो तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी औकात क्या सीट पे बैठी है? तुम्हारे बस का संभालना नहीं है तो। पावर तुम्हारी, पुलिस तुम्हारी, मिलिट्री तुम्हारी, सब कुछ तुम्हारा, करा कांग्रेस रही है। अगर कांग्रेस करा रही है तो फिर तो कांग्रेस गवर्नमेंट तुमसे ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। तुम कुछ हो नहीं उसके सामने, कांग्रेस अपोजिशन में भी नहीं है और वो करा रही है। आज की तारीख में कांग्रेस के पास इतने भी सीटें नहीं है कि वो विरोधी कहला सके अपने आप को, और आप करें कांग्रेस करा रही है, कांग्रेस करा रही है। शर्म आती है आपकी इसी बुजदिली पे, आपके इस बचपने पे। कसूर आपका, दोस्त दूसरे। आप क्या कर रहे हैं सीट पर बैठ के? या तो आपको सीट संभालनी नहीं आती, या आप समझते नहीं आपकी ड्यूटी क्या है, ये बात है। अगर दूसरा दल इतना पावरफुल है विरोधी होते हुए, तो फिर तो वही पावर में आने चाहिए, फिर आपकी जरूरत क्या है? तो आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे कि उनसे करेंगे क्वेश्चन। अगर कांग्रेस गलत है तो एक्शन वो बंद कर दो उनको उठा के। क्यों नहीं करते? आप में हिम्मत है? नहीं है, बस दोष दे दो, झूठ बोल दो, कुछ भी बोल दो। जम्मू कश्मीर में 6-5 महीने से आपने दबा के रखा है, वो कांग्रेस जिम्मेदार है उसके लिए। नौकरियां नहीं मिल रही उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। आप कंपनियों को बेच रहे हैं उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार है उसके लिए? आप भड़का रहे हैं पब्लिक को, उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार है उसके लिए?
कोर्ट फैसले नहीं कर रहा, क्या कांग्रेस जिम्मेदार है? राम मंदिर पे गलत फैसला किया कोर्ट ने, जेएनके का सुन नहीं रहा, ईवीएम पे सुन नहीं रहा, सीए पे सुन नहीं रहा, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? कांग्रेस जिम्मेदार है। किसको जिम्मेदारी दे रहे हो? जो आदमी दूसरे को जिम्मेदारी देता है, ये जिम्मेदार है, वो आदमी नालायक है, इनएफिशिएंट है, उसको सीट पे रहने का हक नहीं है। बच्चे जो आते हैं बीएम में कर रहे हैं, वो सड़क पे, आम आदमी सड़क पे है। सड़क पे कौन है? सड़क पे पब्लिक है। पब्लिक जिसकी वजह से आप आए, वो पब्लिक, वो पब्लिक जिसको आप कह रहे तुम जिसके नागरिक नहीं हो, सबूत दो, वो पब्लिक। ऐसा सबूत देगी पब्लिक कि तुम्हारी जबान बंद कर देगी। तुम याद नहीं रखोगे कभी तुम प्राइम मिनिस्टर थे, भूल जाओगे हमेशा के लिए। ऐसा जवाब देगी पब्लिक। पब्लिक है ये। तुम नागरिक से पूछ रहे हो, बताओ तुम नागरिक हो? कितनी शर्म की बात है। जिस नागरिक के वोट से आप बन के आए हो, जिसके वोट से आप इस सत्ता में बैठे हो, उससे कह रहे हो सबूत दो। तो पहले आप सबूत दीजिए ना कि आप सही वोट लेके बैठे हो। आप दीजिए इस्तीफे, सारे के सारे, सारे एमपी इस्तीफे दो, सारे मिनिस्टर इस्तीफे दो, प्राइम मिनिस्टर इस्तीफा दे, और राष्ट्रपति भी इस्तीफा दे, क्योंकि वो भी आपके वोट से आया है। देंगे? दीजिए इस्तीफे। हम तो नागरिक नहीं है इस देश के, हम नागरिक नहीं है। आप बताएंगे हम नागरिक हैं कि नहीं है? इसे कहते हैं अंधेर नगरी चौपट राजा। चौपट है आप राजा नहीं, चौपट है, बनाना है आप। और क्या होता है? झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, खुलेआम झूठ। और झूठ क्या होता है? धर्म को ले आए बीच में, धर्म के नाम लिख रहे हैं संविधान के कानून में। क्यों लिख रहे हैं आप? संविधान में लिखा है धर्म? कौन से संविधान? हमारे संविधान लिखा है हिंदू मुसलमान, लिखा है उसमें? नहीं, लेकिन आपने लिख दिया। इतने बड़े हो गए हैं आप, संविधान के खिलाफ जाके नाम। क्या जरूरत है आपको? आप खाली भड़काना चाहते हैं और कुछ नहीं करना चाहते। ये आपका कैरेक्टर है, चरित्र है, देश के ऊपर तलवार चलाने का, और आप तलवार चला रहे हैं। खैर, अब बहुत हो गया। क्या कहूँ, ज्यादा बुराई करना अच्छा नहीं होता है। अब मैं कहूँगा, बंद करूँगा, क्या करूँगा, क्योंकि ज्यादा लंबा खींचने का फायदा नहीं है। वही कहूँगा। जय भारत, धन्यवाद।